now they can just sit and wait and start thinking that nobody beats them on net run rate. Ahmed Dania's brilliant performance. His 2 overs at this stage, he was making it very difficult, especially for Saad Khan to put the ball away. He also got in form Saud Shakil. This actually changed and turned the game in Central Punjab's favour. Yeah, that was an inspired spell of bowling. Remember, he's been sitting out the last few games, so he came into the fold and he really bowled his heart out. He bowled with pace, and that short pitch stuff really rattled that middle order of Sindh that you're talking about. Saad Khan and then later Saud Shakil and even Asif Mahmood. He struck him on the grill. That was a superb spell. It was indeed a very, very good spell. Now let's move our focus to the match today. We've got Northern versus Central Punjab, and let's talk about Northern. Northern has been shifting their top order, and they're trying to find their top 3, or I say opening pair. Huraira has been tried. We know that Hassan Nawaz is not available to them anymore. But Nasir Nawaz, Huraira, and you know, we talk about Rohail Nazir. They've just been not there if you talk about consistency. You make a very good point, because this is where Northern's troubles are, at the top of the order. And if you look at the teams, what they're doing at the top 3, you see Northern is really struggling, because their average of 15 and the strike rate is not good as well. The first 3 batters, they've really struggled. They've chopped and changed. Like you just said, Nasir Nawaz, Huraira and Rohail Nazir played in the last game at 1, 2 and 3. But this is the area, because they start so slow and lose wickets as well, that it takes a lot for them to come back into the game. They've gotten away with a couple of close games, but last night, yesterday afternoon actually, it was too much of a problem in the beginning, and in the end it costed them the game. We talk about top 3, let's talk about Huraira. He's a class act, he's a good batter, but is he happy and comfortable with this format of the game? He's had one very good outing. That chat is very, very important between the captain and him. 98 runs in 4 innings. The average has to be better, because the T20's got to really work a little harder. You got the power play on your side. He's so young, so for these young batters to find a method in this format, because we know Huraira was very successful in first-class cricket and one good outing here. But I think he's going too hard too soon. You cannot do that every day on different pitches. You got to just give yourself a little more chance. Get yourself in 20 overs, still have plenty of time. So his mistake has been that he's been going too hard too soon in those couple of failures. Let's speak about Rohail Nazir. He's also another batter that they've been working on. If they can make him open, or he can bat at number 3 consistently. And he has had fair chances, good opportunities. The average is not worth talking about, but I don't know if the fluctuating number that he's been given, and he's been in and out of the 11, does that have an impact on him? It may have, but he's a better player than those. And Northern management will be really disappointed with those figures. And we also saw that he's carrying a hand injury as well, which means that his mind is occupied somewhere else. And that can only affect you. Once again, young, just 20 years of age. Age is on his side, but he's got to start making use of these opportunities, because they may be few and far between in future. All right. Time for us to head to Marina, and she's got the pitch for us, so let's find out what we have on store. It's a hot afternoon here at Multan Cricket Stadium. The temperature obviously living up to the standards. Let's have a look how it is today. We've got 35 degrees out in the middle, and humidity, it's 52%. Right, the strip for today's game. Already we had witnessed one game on this one, and let's talk about dimensions first. 72 all over the ground. Batters, you've got some news. You have been having hard times scoring runs, but this surface, it's a lot firmer. It sounds good. We've got some live grass, so it indicates that there is life in this surface. Probably the first game we witnessed here, the average score was 180. So you can come out with a big heart. You might require a little bit of time to settle in with the pace. Pacers, you have been enjoying your time out here with this grass and firmness. You'll get some good bounce and movement. Spinners, you have to be very accurate. But again, it's going to be a good contest. Overall, I again will say that fielding is very important. Otherwise, just bat first on this one and try to defend it.
Okay, so you bat first on this one, according to Marina. Scores have been big. This pitch has seen scores in the excess of 185 plus, so it's all to play for. If you're a batter, your eyes would be lit up. Yeah, the good thing in this tournament has been the pitches have remained same for the entirety of the game. So you go by your strength. Like I always say, on this kind of pitches, you got to play good cricket for 40 overs to come up on the right side. Okay, let's talk about some good toss. And Ali Yunus has the two captains. It's a must-win game for Central Punjab as they take on Northern for the 27th game of Kingdom Valley National T20 Cup. And we're all set for the toss. I've got the two captains. Qasim Akram for Central, Umar Amin will lead Northern, and Iqbal Sheikh is the match referee. It seems like Qasim Akram will flip it. Tails. Tails is the call. Tails it is. Umar Amin has won the toss. Umar, क्या करेंगे? Sir, we'd like to bat first. क्या वजह लग रही है आपको? सर सेम वजह है. आई थिंक पिच बहुत अच्छा है, बैटिंग के लिए बोर्ड प्रेशर के साथ जाएंगे. कल का मैच आपकी फेवर में नहीं गया, क्या लगता है कहाँ गलती हो गई? काफ़ी गलतियां की कल. कोशिश करेंगे कि आज वो गलतियां ना रिपीट हों. पावर प्ले में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा बॉलिंग में भी प्लान्स के मुताबिक बॉलिंग करने की ज़रूरत है. आमिर आपके एक मेन ऑलराउंडर हैं, वो नेशनल ड्यूटी पे चले गए हैं, उनकी कमी तो महसूस होगी आपको? जी बिल्कुल. आई विश हिम ऑल द लक. उनका फर्स्ट टाइम पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया है, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं. लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें कोशिश करेंगे कि उनकी कमी महसूस ना हो. और आज की टीम न्यूज़? सिर्फ एक चेंज है, आमिर जमाल की जगह तैमूर सुल्तान आए. राइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. कासिम, मस्ट विन गेम, क्या तैयारी है इस गेम के लिए? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है. और जिस तरह की पिच है और राइज होता है बॉल, हमारे मेन स्ट्रेंथ फास्ट बॉल्स हैं. इंशाल्लाह कम से कम टारगेट पे डिफेंड करेंगे. यंग कैप्टन है आप, शोएब मलिक की मौजूदगी टीम के अंदर कितना हेल्पफुल है आपके लिए? जी काफ़ी हेल्पफुल है, और वो मुझे काफ़ी कुछ बताते हैं अंदर इन फील्ड में, तो बड़ा कुछ फ़ायदा मिलता है उनको. आप काफ़ी क्लोज हैं, आखिरी मैच खेल रहे हैं आप पूल मैच का, और नेट रन रेट पे आपको नज़र रखी हुई है क्योंकि एंड पे शायद आपको उस पर बात आ जाए. जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है. तकरीबन टीमों ने 5 मैच जीते हुए हैं. आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जीतेंगे. और बाकी एनी चेंज फॉर द टीम? जी 2 चेंजेस हैं. अब्दुल्ला शफीक की जगह इरफान यादी हैं, और उसामा मीर की जगह वगात मकसूद आए हैं. चलिए, ऑल द बेस्ट कासिम अकरम. Right, the news is that Northern have won the toss and they will be batting first. Let's have a look at the two teams once again. 2 changes for Central Punjab. I feel they're good changes. Waqas Maqsood bowled very well the last time around. He was there with him. And you talk about Irfan Niazi. That's also a very good change because Abdullah Shafiq is struggling. Salman Irshad is there. I don't know why he said Taimur Sultan in Northern. Because there's got to be 2 changes, not 1 change. So we see Salman Irshad is in the 11 and so is Taimur Sultan. Okay, so, you know, sometimes I feel people test you. Or maybe there's nerves and pressure on both teams because a lot hinges on these games. And Northern have a game on hand on Central, but Central is playing their last game, so everybody feeling the heat. And this is the crunch moments of this tournament, and their entire season depends on this for this T20 tournament. So, I mean, we can expect a cracker. Umar Amin probably forgot about Salman Irshad. I don't know, I saw Salman Irshad marking his run-up, so I was like very, very sure, because you only mark your run-up when you're actually playing the game. So we'll have to wait and see. All right, head-to-head, what do these two teams are like? I mean, what have they done in the past in the national T20s? Let's have a look. This is 4-2. Northern has been very good throughout. Even yesterday when we had this comparison, they were way ahead. So they have a 50% advantage over their counterpart, that's Central Punjab. Yeah, they always do good in the round games like we discussed yesterday. So once again, their stats are better than Central Punjab in the league stages, but they really stumble when the knockout games come around. All right. Thank you so much for joining us. And Pleasure. thank you for joining us. We'll take a short break. When we come back, we'll have action in match 27.
A very warm welcome to Multan Cricket Stadium. We're all set for match 27 of Kingdom Valley National T20. It's Central taking on Northern. We have witnessed some great action here at this very stadium. This is the surface. It looks like a very firm one, some live grass. That definitely indicates it has life in it. The Pacers will have their timeout batters. You've got some good news. It has the average first inning average score of 180, so runs are available. Central had a great win. These are how the lineups look like. Northern with two changes. Taimur Sultan walks in and Salman Irshad coming back into the playing 11. They've had their fair share of trouble up the order, trying to strengthen them. Central Punjab definitely strengthening their pace further. Got him Irfan Niazi back and Waqas Maqsood in the lineup. Guys are coming in who are officiating this match, Asif Yaqub and Rashid Riaz, the two gentlemen with immense experience. I've got alongside with me Ali Yunus. Good afternoon. A very good afternoon to you too, Marina. This is the game of the tournament for me. Central Punjab looking to win this one and win it with a better net run rate also, because they're way behind as far as the net run rate is concerned, so they will go all in, all out in this game, and we can tell by the intent, by the changes they have made. Abdullah Shafiq was not scoring runs. They dropped him and brought in that big hitter batter Irfan Niazi, so that shows that they're going to go after this target no matter what happens. On the other hand, Northern also good changes. One forced one, the other one Shinwari didn't look in good touch. They brought in Salman Irshad, that X factor of his slingy action. But for them, they too have to deliver up the order. Huraira and Nasir Nawaz, they've been struggling up the order. Those top three batters have been really struggling for Northern, and that has been their cause of trouble. It's going to be a good contest. It's a splendid game we witnessed the other night. Central won against Sindh by 17 runs. Northern, they have to work hard, but it's not new surface for them. They scored 190 already on this. 132 run partnership between the openers. Eyes will be following this guy, Huraira. He's got a lot of potential. Just was a little impatient the other day. Once he settles in, it's going to be a big score. Absolutely. As you mentioned it, he has to stay a little patient. Just pick and choose your deliveries, which one to hit. You just cannot go bizarre and start hitting every delivery. When you are technically this correct, you got to make use of it. And they still have one more game to go. It's not that it's a do or die situation for them. They can take their time. That's just 20 years of age. 100 runs, 150 strike rate, also impressive. Best of 86. It's got lots of talent behind him. Nasir Nawaz, he did had few good shots. But really couldn't capitalize all the opportunities provided, but he can bat. 28th match, best is 47. He's far better than that. Strike rate can go up, but it seems like the surface might aid their stroke play. Amir Yamin, he'll be asking the questions. He's got that in swing going for him. Always loves to trouble the batters up front. He'll start the proceedings for Central Punjab from pavilion end. Got one slip, got deep square leg and deep third man. The regulation field for Nasir Nawaz. Rashid Riaz, the word is play. Oh, shape right away. That's good sign for Amir Yamin. He always swings the new ball. Amir Yamin, player of the match in the last game, last evening, bowled beautifully with the new ball, and then to follow with that old ball too. He's a very good exponent of the new ball. Qasim Akram was very impressive yesterday with his batting, with his captaincy. Of course, he has the help of Shoaib Malik with him in the side. And this is a good pitch, I tell you, Marina, already. Yeah, you can tell by the sound of it. First delivery.
straying down the leg. We'll have to ball it again. There'll be a wide. Yeah, and it's interesting. Whenever a fast bowler looks a pitch like this, he tends to, try a little more. He puts in a little more effort into it, and that is what happened with Amir Yamin. If you can swing it nice, just keep it simple. The ball is swinging for you. That's better. He's got away with it. We'll be pushing for the second one, and we'll get there. Off the mark, Nasir with a couple. I have a feeling that it's a good toss to lose for Central Punjab, because they're the one who will be chasing that net run rate. And if you're batting second, you have a target in your mind, and then you can go about it. On a pitch like this, they would fancy that target, whatever posted by Northern, in that quick time. So that thing definitely goes in favour of them. And they've added another fast bowler, Waqas Maqsood, that will bring a lot of experience in this bowling lineup. That's crunched. Oh, just through the hands. Should have been stopped there. But first boundary for Nasir Nawaz and for Northern. He's up and running. Fantastic start. Just through his arms. And this pitch is such a good pitch that you can play shots like that. Just waited enough, waited for the ball to swing, and then played it right between the fielders, and a better effort was required by Tayyib Tahir. You're in a crunch game, you got to be spot on. Yep, the disappointment is right. That's the last thing you associate with Tayyib Tahir. He's been exceptional in the field. Straight away now, slips comes out. Got shot mid-wicket. Straight back. It's looking good. I did say it might aid Northern's batting style because they love to come out and display themselves. Yeah, it seems like play through the line pitch, as we have witnessed in the first 4 deliveries, although Amir Yamin swings the ball. But yes, as you just mentioned, that Nasir Nawaz, he will like this pitch because he likes playing strokes and the ball is coming nicely, even and with good pace. Good bounce and good running as well. It was off the back foot but quick to call. Well, it's about time these two deliver for Northern. They need a good opening partnership if they want to put up a good target. Yeah, that was Amir Yamin's 3 wickets against ATM Southern Punjab. That was a brilliant delivery. He bowled so nicely with that new ball. Ball swings the ball both ways. And now with the old ball also, he's got that habit of bowling Yorkers. He's a handy cricketer. He had a point to prove to ATF Southern Punjab. He was extra pumped up. Last delivery for the first over. Oh, that's beautifully done. That is going to race away. Another boundary for Northern. First one for Herrera. First over gone. Northern 12 without loss. You can already tell that this is a fantastic pitch. Look at that. The first delivery that he faces right from the middle of the bat. No chance for Qasim Akram. Disappointed. 12 for none. By these 2 boundaries, you can imagine how well the timing has been on this surface. The bowlers will have to work a little bit hard to contain the runs. Waqas Maqsood, he walks back in the playing 11. Was brilliant with his bowling, but his fielding, that's where he needs to improve. Yeah, adds so much experience to this central lineup. They need a bowler like him on this pitch. With all those variations, slower ones, back of the hand delivery, slow bouncers. You need them on a pitch like this.
No slip for him, just the regulation field. Third is back at the boundary and so is square leg. Straying down the leg. Another good single. You'll have to be accurate on this pitch. There might be some support, but runs are inevitable. And talking about Northern's top order, they have struggled big time in this tournament. If you look at their top runs getter, it's Sohail Tanveer in it, there is Amir Jamal in it, but not really the top three. There is no one in that list of highest run getters for Northern in this side. There is no Amir Jamal. Asif Yaqub, very good umpire, very experienced, hardly gets them wrong. It's caressed away, but well fielded in the covers. Dangling the bat, Herrera on this occasion. He's another one, when he's timing the ball, he's brilliant. Can make an impact. Another elite umpire, Rashid Riaz, standing in his 83rd T20. Got two very good umpires on field. And also the third umpire, Imran Javed. Soft hands, no runs there. That's the last thing they want. A run out right now. Don't lose this opportunity, young Herrera. This is a wonderful pitch. Just take your time a little. There are lots of strokes, runs available on this pitch. Just to have to wait for the bat delivery. That's all you need to learn. You're not a pinch hitter. You're not a big hitter of the ball. You're a timer. You're a classical batter. You've got to make use of this opportunity. And this man on your screen, excellent. Imran Javed, the third umpire, and we've got the match referee, Iqbal Sheikh. 31st T20. Off the back foot, straight to the point. Gas is just inviting Herrera to chase that ball outside off stump. See, this is why I say that experience of Waqas Maqsood is so handy for Central Punjab. He's bowled 4 deliveries without a run. He's varied his pace. The last delivery that was much lesser in pace. So he would know how to bowl on a pitch. Yesterday 3 dots and then Herrera lost his wicket. Another good delivery. It's keeping things tight for Waqas Maqsood. He's a utility bowler to have up front in your lineup. Yeah, you see the smartness for Waqas Maqsood. Another one lesser in pace. You probably realize that pace is not going to affect. The more faster you bowl, the more nicely it will come onto the bat. So you got to vary your pace, and you got to be careful from this man also. If you're a Northern player, wonderful player. Always walking up to the young captains and players. Immense help to Qasim Akram and even other players. He's got his thinking cap on always. Just adjusting that deep square leg fielder. This time he found the gap. Caressed away for a boundary. Closing the over with 4 runs. He means business. The look says it all. Herrera, that's the right way to go. Waited enough. It was not that far away from him. And the way he timed it beautifully. Look at that. Look at those eyes. Lit up as he saw that length. A rare bat delivery from Waqas, costing him 4 runs. 17 for none. Ali Asfand, the left arm, coming around the wicket. He's trying to take pace off because Central Punjab has quickly realized it's a good surface. And this is what we have witnessed, that Amir Amin is usually used for 1 or 2 overs maximum with the new ball. He did swing the ball, but the control was not quite there.
And they realized there's something for the spinners early on. And a left-arm spinner early, Asfan. He didn't bowl yesterday at all. He's in the side as a left-arm spinner. But now he has this responsibility of bowling in the circle. Oh, that's true, but good fielding. It was muscled away by Nasir. Irfan Niazi, he's a very important part of this Central Punjab lineup. Down the track, finds the connection, and it's going to travel all the way. First maximum of the innings. I'm not sure this was a good idea. Giving Ali Asfan the over inside 6 overs. And we know that Nasir Nawaz is such a clean hitter of the ball. And if he gets going, he can do this. He can damage your confidence early on. Nice use of the feet and look to hit straight. Right way to go. Put long on and deep mid-wicket, but this time it wasn't a worry for Nasir. Just flicking it into the vacant area. That's good cricket. You being the batter yourself, Marina, you would love batting on this pitch. You can already tell. And I know when you were there at the pitch report, you wanted to bat there. It's so amazing. Eyes were all lit up. Good cricket, pushing hard for the second one. The fielder have to cover a lot of ground. Easy couple there. As the spinner with the new ball, the margin of errors are so minuscule. Just give a little room. And played it straight. Beautiful. Just cut. They've got protection there. Already settling in nicely, Huraira and Nasir. The back foot, he's very comfortable. And tries it again. Another good fielding, just a fumble. Tayyib Tahir. He's got a safe pair of hands. Good morning, Tayyib Tahir. Wake up. He let it go once earlier in the over. This time he's done well. 3 overs gone, 27 for none. After a good start, Northern. The scoring at 9 per over. Huraira and Nasir Nawaz well settled in. That's how their journey has been. They've got mixed bag of losses and wins. They've maybe found some momentum now. Lost against Balochistan by 5 wickets. It seemed like an easy job for them. The fielding was a big letdown. They're gaining momentum. One team to keep an eye on. Mukas will continue from far end. And that's Upesh, but that will be safe. They've got protection. Have to be careful just chasing that ball outside off stump. Interesting field positioning for Herrera. They know that he likes playing in that cover area. They've got third inside the circle, and they've got a deep cover in place. That is a defensive field early on. You're looking to win. You need wickets early on. You're just giving them easy singles. Oh, that's true. Poor fielding this time. That is a gift, and Nasir, superb timing on this one, will earn a reward. That's not going to help their cause. Central Punjab in a crunch game, looking to win this one, and you have let that go. That Faizan is generally a very good fielder, but this one is a lazy effort. Took so much time to come down. The boundary to start off this over. Looking for a big one here, Northern.
just nudging it around. That's good batting, sensible batting from Nasir. Every time he got a boundary, he went for a single the very next delivery. Also good adjustment by Waqas Maqsood. Slower in pace, because he's probably got to realize that the pace is not going to work. Now just providing a little bit more cushion towards the offside. Tayyib Tahir walks in now from the short mid-wicket area, especially for Herrera. He'll love to play those drives. Straighter this time. They need wickets definitely, as you said. If you look at the field for Herrera especially, they've got deep square leg and deep cover. It seems like Waqas Maqsood isn't sure about his line of attack. Yeah, the field suggests that he's going to bowl outside the off stump, having deep square leg, but then you have a third inside the circle. Edges will carry to 4. So he has to be very tight with that line and length, very particular where he wants to bowl. Oh, straightish. It'll be safe, but won't be travelling to the boundary. Pushing hard for the second one. That's good running. Change in pace again. Decreased the pace for Waqas Maqsood. But Herrera just went through with the shot, and this was a similar sort of shot that he lost his wicket at the last time. Remember, it was a similar type of shot, but this time he was lucky that it went right straight, and the pace was not quite there too. Eight off the over so far, just one delivery to go. Dot to end the over. Northern with a good start, 35 without loss after 4. सेंट्रल पंजाब की टीम, लेकिन मुमकिन है कि ये ख्याल हो कि ये पावर प्ले में पेसर्स का हाथ बढ़ा सकते हैं, 2 रन का और इजाफा, क्योंकि इसके अलावा कोई बात कुछ समझ में आता नहीं है। शाह फैसल जी बिल्कुल, काफ़ी ये हैरानकुन फैसला था कि अलियास पंत को तरजीह दी गई। प्रेशर गेम है, सामा ज़्यादा तजर्बेकार हैं, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन शायद कप्तान का ज़्यादा एतमाद अलियास पंत पर था। डिफ्लेक्ट किया क्योंकि वकास बर वक्त गेंद को नहीं रोक सके, इससे 1 रन का और इजाफा। या क्योंकि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो मांग है इन दिनों आलमी सतह पर भी वो लेग स्पिनर की है, ना कि फिंगर स्पिनर की। और अलियास पंत बिल्कुल ये नए हैं इस तर्ज की क्रिकेट में, और अभी तक इनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा खातिर खा है नहीं। और जोरदार तरीके से खेला और ये क्लियर कर जाएंगे। गेंद सीधी उस सहसर को लगी, उस इश्तिहारी सहसर को जो बाउंड्री के ऊपर रखी गई है। टीवी अंपायर की मदद लेना चाह रहे हैं राशिद रियाज। ये फील्डर बिल्कुल इस बॉल से पहले यहीं पे था जहां पे ये बॉल गया है। इससे पहले तेज बॉल कर रहे थे, खिंचा हुआ बॉल कर रहे थे, तो स्क्वायर पर 2 फील्डर थे और मिड विकेट काफी सीधा था। इस बॉल से पहले उनको स्क्वायर किया और इस मर्तबा वो गेंद को देखते ही रह गए। बाउंड्री लाइन को क्या ये बराह रास्त जाकर लगी है? जी हाँ, ये लगी तो खासी हद तक बराह रास्त है। अब अगर अंपायर समझते हैं कि हाफ वॉली पर लगी है तो फिर 4 रन करार देंगे। या टीवी अंपायर जो हैं यहाँ पर शक का फायदा जो है वो फील्डिंग टीम को देंगे। आमतौर पर इस तरह के जो हालात होते हैं, इमरान जावेद हैं जो रात फील्ड अंपायर थे जब सिंध और पंजाब की टीमें खेली थी, लेकिन इस वक्त
वो टीवी अंपायर की कुर्सी पर मौजूद हैं और अंपायर को शायद शक है कि गेंद पूरी तरह नहीं लगी है। अपने फैसले तक पहुंच गए और 6 रन का इशारा। यहाँ सही फैसला आ गया आखिर में। हुरैरा को 6 रन मिल गए। अच्छी बैटिंग पिच, 44 रन पहले ही बन चुके हैं। सेंट्रल पंजाब की टीम को कदरे मुश्किल सूरत हाल का सामना है इस वक्त, खासतौर पर पावर प्ले में। आज उन्होंने बहुत ज्यादा रन्स पहले ही दे दिए और जो विकेट का कॉलम है वो अभी भी खाली है। 5 ओवर्स के बाद 44 पर कोई नहीं। Change, right arm over. यहाँ कासिम अकरम जो हैं ये चौथे कम उम्र तरीन कप्तान है जिन्होंने T20 में पाकिस्तान में किसी टीम की क़यादत की। शादाब खान जो हैं उन्होंने 20 साल की उम्र में कप्तानी की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की 2019 में, और अजीम घुमन, रोहेल नज़ीर भी इस फहरिस्त में शामिल हैं और तैमूर भी। इस नौजवान के चर्चे हैं। हुनैन शाह टूर्नामेंट में उन्होंने अपना डेब्यू किया और काफी मुतासिर किया है। अच्छा इकोनॉमी है इनका पहले 4 मैचों में। इस बार उठाकर खेला लेकिन 4 रन नहीं मिलेंगे और दूसरे के लिए भी आसानी से वापस पलट गए। इरफान न्याजी जिनको आज टीम में शामिल किया गया है आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की जगह पर। और सेंट्रल पंजाब की जो टीम सिलेक्शन है वो भी खासी हद तक दिलचस्प है और साथ साथ नॉर्दर्न की भी। नॉर्दर्न को कल बॉलिंग की वजह से शिकस्त हुई। आज उन्होंने एक बॉलर कम करके एक इजाफी बैट्समैन तैमूर सुल्तान को इस लाइनअप का हिस्सा बना लिया। 2-in-1 क्रिकेटर को रिप्लेस करना था उन्हें, आमिर जमाल को। टीम कॉम्बिनेशन जो है वो टीमों के मुतासिर हुए हैं। अच्छा स्कोर ड्राइव और उतनी अच्छी फील्डिंग भी अली की। दरअसल 2 तब्दीलियां की हैं नॉर्दर्न ने। आज तैमूर सुल्तान और सलमान इरशाद ये टीम में शामिल हैं और जिस तरह आपने बताया कि आमिर जमाल को पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और उस्मान खान शिनवारी, ये 2 जो हैं ये बाहर हो गए। तैमूर सुल्तान और सलमान इरशाद। सलमान इरशाद ने शिनवारी की जगह ली है और तैमूर सुल्तान ने आमिर जमाल की, यूं कहना चाहिए। टॉस पर उमर अमीन भूल गए थे, उन्होंने एक ही तब्दीली का जिक्र किया। लेकिन बात यहाँ करने की है कि नॉर्दर्न का जो प्रॉब्लम एरिया रहा है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर रहा है। पहले 3 खिलाड़ियों की उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, पावर प्ले भी हल्के गए हैं उनके। आज उसके बरक्स आगाज किया है इन्होंने। स्क्वायर कट करने के लिए गए लेकिन गेंद उस रफ्तार से आई नहीं। इससे पहले इन दोनों के दरमियान नासिर और हुरैरा ने सिंध के खिलाफ 132 रन की पार्टनरशिप की थी। हुरैरा मैन ऑफ द मैच रहे थे और यही वो पिच थी दरअसल जहां पर दोनों ने इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप की। स्लिप में अभी भी कोई फील्डर नहीं। थर्ड मैन के फील्डर फाइन है क्योंकि खासी तेज बॉलिंग करते हैं हुनैन शाह। इस बार हवा में खेला और गेंद सीधी हाथों में आ चली। शुएब मलिक
उन्होंने चंद कदम आगे चलकर ये कैच मुकम्मल किया और हुरैरा का ये बड़ा कमजोर शॉट था जो सीधा अंकल के हाथों। क्या हसीन इत्तेफाकात का खेल है क्रिकेट। बिल्कुल बल्ले के बॉटम पे लगा, हुरैरा ने जैसे ही खेला उन्हें अंदाजा हो गया और फिर जैसे ही उन्होंने शोएब मलिक को देखा उन्होंने वापसी गिरा ली, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां दूसरा चांस मिलने वाला नहीं है। और हुनैन शाह ने अपनी मुतासिर कुन बॉलिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है इस टूर्नामेंट में। हुरैरा अच्छे आगाज के बाद आउट हुए 20 पर, नॉर्दर्न 47 पर 1। अंग्रेजों ने काम आसान कर दिया। आज नंबर 3 पर बैटिंग करने आ गए हैं कप्तान उमर अमीन। कल रोहेल नजीर ने नंबर 3 पे बैटिंग की थी। यहाँ इसी टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने अपने 3000 रन मुकम्मल किए थे उमर अमीन ने। पिछले मैच में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी जब टीम को बहरान का सामना था। लंबी इनिंग्स खेली, कुछ मौके भी मिले, लेकिन अपनी फॉर्म बहाल करने में कामयाब हुए कप्तान। और बैटिंग दर्द-ए-सर थी नॉर्दर्न की रावलपिंडी में, लेकिन मुल्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो पहले 3 खिलाड़ी हैं वो कारकर्दगी दिखाते हुए अब नजर आ रहे हैं। हुरैरा के आने से फर्क हुआ है। और तैमूर सुल्तान जो हैं वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन हैं, तो क्या वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे? जीशान मलिक से अब पहले आएंगे या बाद में? अच्छा स्क्वायर ड्राइव और उतनी उम्दा फील्डिंग भी। आसिम अकरम हमेशा की तरह फुर्तीले, मुस्तैद और तेज कदम। ये देखिए हुरैरा बिल्कुल गेंद के ऊपर नहीं आए। स्किडी बॉलर हैं हुनैन, ज्यादा बाउंस हासिल नहीं करते और इस मरतबा हुरैरा को शिकार किया। हुरैरा ऑन दी अप खेलते हैं ड्राइव, ये उनकी शॉट है, लेकिन एक्सिक्यूशन में चूक गए। 6 ओवर पावर प्ले से पहले आखिरी ओवर हुनैन का सिर्फ 3 रन आए हैं इसमें। जल्दी करनी पड़ी, वहां पर तैयब ताहिर थे और थ्रो ओवर हुई, लेकिन इतनी नहीं कि इजाफी रन बन सके। खासियत तक खामोश रखा हुनैन शाह ने। सेट बैट्समैन को चलता भी किया। 48 पर 1। यह पावर प्ले में आज पावर प्ले की तरह ही बैटिंग की नॉर्दर्न के दोनों ओपनर्स ने और यही उनकी साख भी रही है। नासिर नवाज ने सामने छक्का लगाया था, उसके बाद मिस फील्डिंग पर कवर ड्राइव देखने में आया। रन्स विकेट के दोनों तरफ बनते हुए नजर आ रहे थे और यहाँ बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद पल्ले पर आई नहीं हुरैरा के। और इस तरह ये इकलौती विकेट 47 के मजमूए पर गिरी। लेकिन दोनों ही टीमें सूरत हाल से खुश होंगी, खासतौर पर नॉर्दर्न जिनको अच्छी इब्तिदा मिल गई। स्कोर 50 के करीब पहुंच गया है। अब आए हैं अहमद दानियाल। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की थी उन्होंने कल रात को सिंध के खिलाफ। जो उनका स्पेल था उसने मैच को बिल्कुल अपनी टीम की जानिब मोड़ दिया, विकेटें भी हासिल की और जो पेस और हॉस्टिलिटी थी काफी ज्यादा उन्होंने झटका दिया था सिंध की टीम को। यहाँ से टैप किया 1 रन के लिए। सबसे कामयाब बॉलर हैं ये सेंट्रल पंजाब के, हालांकि तमाम मैचेस खेले नहीं। अहमद दानियाल 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं। ज़्यादा लंबा रन अप नहीं, हमेशा अपनी रफ्तार से मुतासिर करते हैं। अब वेरिएशन का भी
बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ उनकी आजमाइश थोड़ी मुख्तलिफ होगी, उनके पास वेरिएशंस तो हैं। यहाँ इस विकेट में शायद उतना पेस और बाउंस ना हो जितना कल शाम को था। वैसे भी शाम के मैच में बॉल ज्यादा स्किड कर रहा था विकेट पर। देखते हैं आज किस हिकमत अमली से आते हैं। बैकफुट पर धकेलने में कामयाब तो जरूर हुए पहली 2 गेंदों पर ही। किंगडम वैली, आप ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए किंगडम वैली के, और इनामात हासिल करने का मौका है। सुनहरी मौका बिल्कुल ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि अब इस टूर्नामेंट के भी चंद ही दिन बाकी बचे हैं और आप भी अगले विनर हो सकते हैं। उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन फिर बल्ले पर आई नहीं नासिर नवाज के। और इनको जो मसला दरपेश रहता है, नासिर नवाज को जब 6 ओवर्स खत्म हो जाते हैं, नॉर्दर्न ने अपने 50 रन यहाँ पर मुकम्मल किए, तो जब ये फील्डिंग खुल जाती है तो उसके बाद ये अक्सर देखा गया है कि ये अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। हुरैरा ने तो पावर प्ले में ही ऐसा किया, ज़्यादा सीधा खेलना चाहते थे। नासिर नवाज के लिए 25, 30, 35 का जो हिंसा है ये खतरे की अलामत होती है। इसी स्कोर के आसपास काफी ज्यादा अपनी विकेट का नुकसान उठाते हैं। यह नासिर नवाज ने 2020 में इन्हें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी तकरीबन पूरा सीजन खेलने को मिला था, लेकिन कारकर्दगी में तसलसल का फुकदान रहा है। और नॉर्दर्न की टीम में आपको जो बेशतर क्रिकेटर्स हैं ये T20 या वाइट बॉल स्पेशलिस्ट ही मिलेंगे, और बहुत शौक से खेलते हैं वो ये फॉर्मेट। शादाब खान हूँ, और आप और भी मिसालें ले सकते हैं, सुहेल तनवीर हैं, इमाद वसीम, आसिफ अली भी नॉर्दर्न से ही खेलते रहे। की एक वजह यह भी है कि गुज़िश्ता कुछ बरस में जो क्लब क्रिकेट है रावलपिंडी के इलाके में ख़ास तौर पे और इसके गिरदोनवा में, क्लब क्रिकेट कभी 50 ओवर्स की हुआ करती थी, वो पहले 30-35 ओवर से होती हुई अब ज़्यादातर 20 ओवर्स की क्रिकेट होती है क्लब क्रिकेट में भी। इसीलिए तमाम ही लड़के उस फॉर्मेट में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। और एक ये भी वजह है कि जब आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलते तो फिर आपकी कारकर्दगी में, खासतौर पर बैट्समैनों की कारकर्दगी में, वो तसलसल आ नहीं पाता। नहीं तसलसल और ना ही वो सब्र। अब देखना ये कि नासिर अब फील्ड जब खुल चुकी है, यहाँ पर कितनी देर तक ये सब्र कर सकते हैं, क्योंकि ये उठाकर शॉट मारना पसंद करते हैं। और जब 5 फील्डर्स जो हैं बाउंड्री लाइन पर मौजूद होते हैं तो उसमें फिर ज़्यादा इम्कान यही होता है कैच आउट होने का। ओवर नंबर 7 से 15 के दरमियान ये गेंद नीचे रख के भी काफ़ी बड़े गैप्स हैं, बाउंड्रीज के लिए भी जा सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं। ये इतना अरसा हो गया इनको खेलते हुए कि ये स्किल उन्हें अब आ जानी चाहिए थी। नॉर्दर्न की मैनेजमेंट उम्मीद करते होंगे कि ये स्किल अब उन्होंने सीख ली है, क्योंकि अच्छे आगाज के बाद अगर आप इनिंग्स को लंबा नहीं करेंगे तो उसका टीम को कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ, और जो टीम सिलेक्शन है वो जो बीत गई सो बात गई, ये ऐसे होनी नहीं चाहिए। और ऐसे खेल दिया खूबसूरत तरीके से, लेकिन वहाँ पर हुनैन शाह मौजूद हैं, बहुत तेज थ्रो करने के अहल हैं, इसलिए खतरा मोल लिया नहीं। दूसरे रन का नासिर ने, इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने 53 पर 1।
रुहेल नज़ीर, तैमूर सुल्तान, जीशान मलिक अभी बाकी हैं। मुबस्सिर खान ये भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, बैटिंग ऑलराउंडर हैं। और उसके बाद 4 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। आज सलमान इरशाद की टीम में वापसी हुई है उस्मान शिनवारी की जगह पर। इस तरह 2 ऐसे बॉलर हैं जो स्लिंगिंग एक्शन के साथ नॉर्दर्न की जानिब से बॉलिंग करेंगे, सलमान इरशाद, जमान खान। सीजन में पहली मर्तबा दोनों इकट्ठे प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं। और उठाकर खेला 4 रन्स, रूम क्रिएट किया। और जिस तरह पहले जिक्र हो रहा था कि हवा में शॉट खेलने के ये बड़े रस्सियां हैं, पीछे हटे और इस बात की परवाह नहीं की कि ऑफ साइड में विकेट के सामने 3 फील्डर मौजूद हैं। मिड ऑफ का फील्डर ऊपर था, वही चांस लिया उन्होंने, रिस्क लिया, लेकिन इस मर्तबा वो कैलकुलेटेड रिस्क था और कामयाब हुए इसमें। ऐसी अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो परसेंटेज क्रिकेट थोड़ी सी कम होती है। इस शॉट को वो नीचे रख के भी गैप में से खेल सकते हैं। अच्छी वापसी की हुनैन शाह, यही उनका खासा है कि हमेशा सरप्राइज करते हैं बैट्समैन को। हालांकि कद ज़्यादा बड़ा नहीं है और रात भी जो इनने बॉलिंग की सिंध के खिलाफ, खास तौर पर जो दूसरा स्पेल था, उसी के सबब सेंट्रल पंजाब की जीत मुमकिन हुई। सेट बैट्समैनों को ये परेशान करते रहे। कद ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन रन अप उसमें एक तसलसल है, एक रवानी है, अच्छी अप्रोच है विकेट तक पहुंचने की। ये पैड पर ऊपर लगी, तकरीबन फ्लैप पर लगी थी, इसीलिए ज़्यादा अपील पर तवज्जो आसिफ याकूब ने की नहीं। अच्छी बॉल थी, नासिर काफी तवील कामत हैं, इसलिए लगा ये कि बॉल ऊपर जा रही थी। आसिफ याकूब ने जज के लाइन भी देखनी होगी, शायद थोड़ा सा बॉल लेग स्टंप की तरफ निकल रहा था। अच्छा गैदर और रन अप है। नॉन बॉलिंग आर्म भी इनका देखें, पूरी तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। बात नासिर नवाज की कर रहे थे बैटिंग की। T20 क्रिकेट में भी बैट्समैन के पास वर्सिटिलिटी होनी चाहिए। आप 1 डायमेंशनल प्लेयर हैं तो एक खास हद से ज्यादा आगे आप जा नहीं सकते। तरकश में आपको एक से ज्यादा तीर रखने होते हैं। रफ्तार कम की, उमर अमीन को ज्यादा परेशानी हुई नहीं क्योंकि अभी तक इस पिच पर हमने गेंद को ज्यादा ग्रिप होते हुए देखा नहीं है। उमर अमीन इनके आने के बाद नॉर्दर्न की टीम की फाइटिंग स्पिरिट बढ़ी है और अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए नजर आए हैं। पिछले मैच में ये तकरीबन मैच विनिंग इनिंग खेल गए थे, 67 रन की बलोचिस्तान के खिलाफ, 169 रन बनाए थे। कि मिस सेंचुरी की बदौलत मुश्किल हालात से गुजरी थी कल नॉर्दर्न पहले हाफ में, लेकिन उन्होंने संभाला दिया। गेंद खासी फाइन चली गई। फील्डर हालांकि बहुत ज्यादा बाहर नहीं खड़े किए हुए थे, लेकिन इसे लेट खेला। उमर अमीन के गो के बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी थी, लेकिन 4 रन मिल गए। उमर अमीन शॉर्ट पिच बॉलिंग के भी अच्छे खिलाड़ी, थोड़ा सा जरूर सरप्राइज हुए हुनैन शाह की इस डिलीवरी से, लेकिन लाइन थोड़ी सी बाहर थी जहां पे हाथ चलाने का मौका मिल गया उमर अमीन को और 4 रन हासिल किए। उमर अमीन के आने से जो नॉर्दर्न को एक और भी फायदा हुआ, वो फील्ड में भी हुआ। फील्डिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन की है इस टूर्नामेंट में। और इस टूर्नामेंट में हुनैन शाह ने बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग की भी नहीं। अब राइट हैंडर को तो अब तक बहुत ही नपीतुली बॉलिंग करते रहे हैं, तो लेफ्ट हैंडर के सामने अभी तक इतने सेटल नजर आए नहीं इस ओवर में। एक बार फिर गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरा बैठे। इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। हुनैन शाह 63 पर 1।
cruise control on for Northern. 61 for 1, 63 for 1 rather, after 8. Well settled in Nasir, Umar Amin, the captain in the middle. They have to do some work, Central Punjab. It's a good surface. The bowlers will be tested. Ahmed Daniel bowled so well yesterday. We're talking about his overs, over number 14 and 16. The thing what he deceives the batsman with is his short run-up and then that quick arm action. He gets the ball to sharply rise onto you, and from that good length area. So if you try to hit him straight, the ball ends up high on the bat, and that's the problem. If you try to pull him, he's got pace. That was Sin's undoing yesterday. The crucial time when they wanted to accelerate, his overs helped him. But having said that, Marina, this is a different pitch. So you've got to work even harder as a bowler not to give away too many runs. And also different time when they're playing the match. Last night we saw it was the night game where it was skidding on. It's a different surface. But yes, I do agree, because he's got serious pace. You cannot just chip him straight down the ground. It keeps on rising. You have to go out, got to understand that you have to get on the top of the delivery. Probably punches and drives that are better option rather than just committing a lot on the front foot. It can be done now. He picks that up. That's it. So yeah, it's very different. His bowling has to be improvised according to the pitch conditions. Can come back for 2, no, but it's well done there by Hunain to cover ground. Also, Umar Amin has chosen to bat first, but on pitches like these, where 185 can be chased, it's very difficult to set a total. You just don't know what is enough. It's all about just having a clear idea where you as a team would want to go, what your comfort zone is according to your bowling strengths. It's going down. It's always going down. His bowling touch fuller. In fact, a lot fuller today. Tailing in. It did shuffle, but even then he survived that. Rashid Riaz not interested at all. He's forcing the batters to play drive. And then he can mix it up. He can drop that short one we saw the other night, getting rid of Saim Ayub. It was right in the face. Good pace. He knows how to set up the batters. That's a boundary. Pulled away by Nasir Nawaz. You still get a feeling that he didn't get hold of it, but slightly short, and then he pulled it. He's always hanging on that back foot, always looking for that length. It's very dangerous there. And on this surface, again, you need to adjust your length. With the back of the hand, got enough time to put it away for a boundary. Nine gone. 70 for 1 Northern.
Waqas Maqsood back in the side. Bowled well in the game he was included in today. He's gone for 2 overs, none for 12. That's good. There's 1 wicket for Hunain Shah. They've left out Osama Mir today. He didn't get a ball yesterday. But they've got that all-rounder Irfan Khan Niazi for that. 70 for 1 after 9. You still feel you could have had more runs because you've only lost 1 wicket. Yesterday's pitch wasn't as good, but teams were almost touching 100 somewhere around the 12th over. If they can accelerate, then good. Right now, Omar Amin going runner ball. They've further strengthened their pace attack. Got Waqas Maqsood in now. 4 paces dealing. Amir was expensive in his first over, gone for 12. But I still feel that might be the outcome of what they did last night. Yes, the paces were dominating. It's a day game. I still feel spinners can work for you. They left out Usama, which was a brave call. Got Malik and Yaswand can bowl. Wide signal by the umpire. It's way too high. It took off. It was a surprise. Look at that. Nasir on his toes. It was a lateral jump, literally. Put it away. He's shadow practicing it again. Yeah, good he didn't touch it because that could have gone anywhere. He wouldn't have been in control of that shot. That you get that feeling. You're airborne and you're trying to touch that. There's a third man waiting in the deep. Nasir can actually accelerate if he wants to because he's played good, almost 5 overs he's faced, 27 deliveries. Got only 1 wicket down, can actually take that chance. They need to pick their bowlers because right now fast bowlers will be operating from both ends. Daniel, it's a risk to go after him. Can target Amir Amin. Except for Ali has bowled till now. There's an opportunity. No, it just drops short. Yeah, you're talking about picking the bowlers. I don't see Shoaib Malik bowling today. Even Qasim Akram will get a few. I think they'll rely on those medium paces and paces. So your Daniels will get the full 4 overs. Hunain Shah will, Waqas will. Ali Asman, they tried, went for a few runs. Faizan can, if they want. And then, of course, Irfan Khan. They probably will keep Daniel and Hunain's over for the latter in death overs. They need to implement someone in the middle overs. Amir Amin right now has been decent. Got Faizan, Irfan's option. There has to be a loophole in central Punjab which Northern can exploit in terms of bowling. Qasim Akram hasn't bowled till now. Shared the player of the match yesterday, Amir Amin, with his captain, Qasim Akram. Both played important roles in that match. He finished well, Amir Amin bowled well against Sharjeel, and Qasim was the main cause they got those runs going. He really accelerated in the middle. He looks good at number 4. Anything further down,
he just loses out on partners. Just get that feeling from what we've seen in Central Punjab. That's a good over from Amir Yamin. He's bowling that teasing length. Northerns are 74 for 1. If Northern wins today, it will join the elite of 10 points each. Central Punjab will do the same, but the net run rate is the big question. Central Punjab needs to win this big. It's their last game. Northern have the cushion of having another game after this. Balochistan can go up to 12. Khyber Pakhtunkhwa also can accelerate. They got 2 more matches. Sindh, I feel, could have done better in the last 2 games. They did win it, yes. The last game just... they couldn't score runs after they got to that 100 in the 14th over. Now they'll have to wait on the net run rates. But they still are good because they're 0.2. The teams below them are in minus. Southern Punjab has a good net run rate, but they don't have the points. And tonight they're up against KP, who's leading again the table. It's not going to be an easy task. Waqas Maqsood comes back in, giving away 12 in 2 overs. Waqas Maqsood is back in the attack. 2 overs, none for 12. It'll be a crucial spell this, just 1 over probably. He's here to take a wicket. Central's fielding has been good. They've covered some good ground in the deep. And then there's a hesitation from Nasir Nawaz. So that just helps them. Yeah, quick to leave the blocks in the deep, putting the leg work in. Slight fumble, but still they couldn't really exploit the run out, as you said. He'll be testing them. His cutters, low ones, nagging length. That's a good ball. Shinwari not playing today. Mubassir had a good outing with his captain. They formed that partnership. You just get a feeling something's got to give, especially with Nasir. He's trying to now accelerate. There's some good areas being bowled at him. His biggest problem is that he's always looking for that hard length or short length delivery. That's where he's most comfortable. He's not that comfortable whenever the ball is pitched up. He has struggled to find that connection. Doesn't really come onto the front foot for the drives or the slogs. Waqas is not going to allow that comfort zone to him. Swing and a miss. That's what I'm saying. He's now trying to go big on every delivery he's facing. It was there to be hit. Almost in his arc. Just that angle going away from him. Trying to hit it into the leg side. Probably a better option would be to go down the track. Hit it straight. He just needs to be careful in attempts. Shouldn't be piling those dot balls. It's in the air. Call is for catch. It will sail over that fielder. So the maximum is achieved, the one he was looking for. Waqas Maqsood, the error. That length, he's always looking for it.
And this time he did grab it with both hands. He read it well, quite early, got into the position, just straightening up. And bang. Good swift hands, good pat. Put through. You can get another one. This is the thing. There's no one backing up in that zone. It's only the bowler. 2 achieved. 85 for 1 after 11. He's got a TV in his hand. So that mobile phone is a big one. People have started coming in numbers, even in the afternoon games now. And Friday is an off day here in Multan, so you'd expect more people. Ahmed Yamin's bowled well. None for 16 in his 2. You just get that feeling both these batters are not really comfortable with that fuller length. You feel that you can get underneath it and get that big hit, but it's just not happening for them. And it's also very leg stump line. Kingdom Valley, you can log on to their official Facebook page and have an opportunity to win lots of prizes. A Royal Lifestyle, Kingdom Valley, proud sponsors of the National T20. You see that? Every time it's bowled full into the stumps, he's just not getting that timing going. That's not his strength, Nasir. Again, he loves to just rely heavily on his back foot. Hard length, he can swing a bat at it. If you look at his footwork, he doesn't really commit on the front foot. Always hanging back. And I think they've done their homework, Central Punjab. Majority deliveries are being pitched up. Catch it was the call, but it's over cover. It's well stopped by Hunain. And it will be a boundary check for sure. But the effort is really good. 100% for that. That's really good to see. Fast bowler putting the hard yards in, the dive in. You have to give it to the commitment level. Seems like maybe he was able to contain those 2 runs for his team. Wait for the final decision. But now these two, they need to step up. Look for those boundary options. It's a good dive. From this angle, it seems that the ball is out of his hand. No contact there when he touches the skirtings. He gets rid of the ball before he touches the boundary skirting, but I want to see what happens when he gets up. When does he touch the ball again? Okay, we're not looking at that.
Just 2. He has played it over the fine leg fielder. Not intended in that region, but he's got them 4. I think Amir wasn't expecting that much of a bounce. He did drop it short, but it just took off again. Not in control at all, Umar, but he'll take it. It's going to fly over definitely with the pace and the surface we have today. Good boundary. Eight from the over, 2 balls to go. If they can manage another boundary, one more delivery to go in this over, they would really capitalize on this one. Waqas Maqsood is very accurate. He's hitting those yorkers, the slow ones, the cutters. Amir, they need to go after. He's managed to play that one for a single. They're bowling full at him for sure. 95 for 1 after 12. भी है आपका पाँव या बल्ला तो आप नॉट आउट ही रहेंगे। ये दरअसल नई शिक है, इजाफा किया गया रन आउट के रूल में, जिसका अभी कुछ साल पहले उमर अमीन के साथ ये मसला दरपेश हुआ था जब वो ढाका में एशिया कप खेल रहे थे और इसी अंदाज से रन आउट हो गए थे। उनका बल्ला लग गया था और उसके बाद वो उछल पड़े थे थ्रोज से बचने के लिए और उस वक्त उनको रन आउट दे दिया गया था। वकास मकसूद, इनका एक ही ओवर बाकी रह गया है। आज अच्छी बॉलिंग की है। इनके आने के बाद एक इत्मीनान आया है, कप्तान के पास भी एक अच्छा पत्ता उनके हाथ लगा है। उनके पास वसी तजुर्बा है इस तर्ज की क्रिकेट का और फिर जो है बॉलिंग में वेरिएशन भी आ जाती है। बहुत ज़रूरी है इन दिनों T20 क्रिकेट में बाएं हाथ का फास्ट बॉलर होना। जहाँ बहुत तजुर्बा है वकास मकसूद का इस लेवल पे, जैसे आपने कहा वेरिएशन है, समझदार बॉलर हैं, बॉलिंग करनी आती है। T20 में के स्पेशलिस्ट हैं, स्लोअर वन बहुत अच्छे करते हैं। आज भी आपने देखा जब सर्कल में बॉलिंग कर रहे थे तो बार बार अपनी पेस को चेंज कर रहे थे। यॉक करने की कोशिश की, लाइन से खासा हट गए थे, इसे ये गेंद दोबारा करना पड़ेगी। इतना आसान है नहीं इस उम्र के फास्ट बॉलर्स के लिए इस तरह के सख्त मौसम में यहाँ पर बॉलिंग करना। मुल्तान में आज भी दर्जा हरारत खासा ज़्यादा है। लाहौर में कहते हैं कि जून का सूरज सबसे ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन जो मुल्तान का सूरज है ये चमकने के लिए ये किसी जून का मोहताज नहीं। यहाँ हर महीने ही आपको ऐसी गर्मी दोपहर में मिलती है। यह आखिरी बॉल जिस तरीके से कैजुअल अप्रोच दिखाई है, यहाँ पे सीखना होगा। बच तो आप गए हैं लेकिन खतरा हो सकता था क्योंकि इतने आराम से आए। इससे पहले हमने देखा है एक रन आउट ऐसे रोहित नजीर हुए थे, यहाँ पे भी काफी कैजुअल अप्रोच दिखाई नासिर नवाज ने। इस लेवल पे आपको ऐसी छोटी गलतियां नहीं करनी है। एक और गेंद खाली गई। अब डॉट बॉल से यहाँ पर इज्तनाब करना होगा नॉर्दर्न को अगर अच्छा स्कोर इन्होंने बनाना है। पिछले मैच में 169 रन बनाकर इनकी टीम हार चुकी है, इसलिए बॉलर्स को एक ऐसा हदफ इस बैटिंग लाइनअप को अब फराहम करना है जो सेंट्रल पंजाब और कासिम अकरम
की पहुंच से बाहर हो, क्योंकि बैटिंग सेंट्रल पंजाब की इन दिनों फॉर्म में आ चुकी है। कासिम अकरम ने जिस तरह कल मिस सेंचुरी बनाई, मैच विनिंग मिस सेंचुरी थी सिंध के खिलाफ। और आज तो थोड़ा सेंट्रल वाले ज्यादा डेस्परेट भी होंगे, क्योंकि एक तो मैच जीतना है और अच्छे नेट रन रेट से जीतना है। तो ये चीज काफी इनके जहन में होगी कि तेज खेलना होगा और कितना रन्स पर इनको रिस्ट्रिक्ट करें नॉर्दर्न वालों को, ताकि वो रन्स जल्द से जल्द बनाए जा सके। ये बाल बाल बचे यहाँ वाइड से वकास मकसूद, गेंद जो है वो तकरीबन नीली निशानी के बाहर थी, लेकिन क्योंकि बैट्समैन जो हैं उनने अपनी जगह बदली थी। फिर गेंद बल्ले की टो पर लगी। 50 रन यहाँ नासिर नवाज ने अपने पूरे किए। 40 गेंदों में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया ओपनिंग बैट्समैन ने, और दो बड़ी उम्दा पार्टनरशिप्स में वो इन्वॉल्व रहे हैं। पहली विकेट के लिए 47 और दूसरी विकेट के लिए 52 रन की कप्तान उमर अमीन के साथ। ये अपने करियर का पहला 50 मुकम्मल किया नासिर नवाज ने। बहुत हाईली रेट किए जाते हैं नॉर्दर्न के कैंप में, बहुत बैकिंग मिलती है इनको, और यहाँ पे प्रूव करते हुए कि क्यों इतनी बैकिंग मिलती है, क्योंकि टैलेंट मौजूद है, स्किल मौजूद है, बस एग्जीक्यूट करने की देर थी, और आज इस अहम मौके पे एग्जीक्यूट करते हुए। अच्छा शॉट, लेकिन रन के बगैर वकास मकसूद ने अच्छा खत्म किया इस ओवर को, जो कि वाइड से शुरू हुआ था 99 पर 1। अगर आप मुल्तान आए हैं और आप यहाँ को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए मोहम्मद फैजान को, 5 मैचों में 4 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। इस टीम को जो अहम लम्हात दरकार थे सेंट्रल पंजाब को, वो इन्होंने फराहम किए हैं, खासतौर पर बैटिंग में फैजान ने। इस बार उठाकर खेला। शोएब मलिक ने ज्यादा पेशकदमी की नहीं, बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर खड़े हुए थे। या 100 रन मुकम्मल हो गए। देखिए उठाकर खेलना चाहते थे, और शोएब मलिक जो हैं और शायद थोड़ा सा यहाँ पर फुर्ती दिखाते तो वो गेंद के नीचे पहुंच सकते थे। और यहाँ पर फिर मौका है, और ये कैच जी हाँ आखिर में ड्रॉप कर दिया। ये 3 से 4 दफा कोशिश की कि दाएं हाथ बाएं हाथ, दाएं हाथ बाएं हाथ, और फिर ये निकल गई बाएं हाथ के पास से। तो शायद ये तासुर दे रहे हैं जैसे सूरज इनकी आंखों में आ गया था आमिर यामी की। जहाँ लेंथ डिलीवरी थी, कोशिश बहुत शानदार रही, और वही सूरज शायद लगा, और यहाँ पे ये वो मोमेंट था जैसे शायद उनको लगा कि उनका पांव लग गया, लेकिन शानदार एफर्ट के नंबर पूरे होंगे। टीवी अंपायर जो है उस वक्त जरूर देखना चाहेंगे जब इनका पांव जो है ये पीछे जाकर स्कर्टिंग से लगा है, क्या उस वक्त ये गेंद के साथ तो कांटेक्ट में नहीं थे, यहाँ गेंद से हटे हुए हैं, और जी हाँ ये बचा ली है इन्होंने बाउंड्री। हम कह सकते हैं कि छक्का बचाया है इन्होंने अपनी कोशिश से। एफर्ट कमाल का था ये, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, आखिर में हैंग ऑन नहीं कर सके। स्कर्टिंग का भी डर था कि पीछे पाँव नहीं लग जाए, कैच भी पकड़ना था, छक्का भी रोकना था, तो काफी कुछ जेन में चल रहा होता है। लकी रहे उमर अमीन। ये इसलिए कहते हैं कि आपके जो बाउंड्री राइडर हैं, खासतौर पर जो सामने फील्डिंग कर रहे होते हैं स्क्वायर के, उनका कद बड़ा होना चाहिए। आमिर यामीन इसमें कोई शुबा नहीं कि बहुत अच्छे फील्डर हैं, अच्छे एथलीट हैं,
लेकिन ये लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट या लॉन्ग ऑफ के इलाके में अगर यहाँ पर न्याजी मौजूद होते तो ये कैच पकड़ने में कामयाब हो जाते। बहुत अच्छे। या उसामा मीर थे इब्तदाई मैचेस में। लेकिन अच्छी पोजीशन है नॉर्दर्न की, उन्होंने अपने 100 रन्स यहाँ पर मुकम्मल कर लिए हैं और अभी 9 विकेटें बाकी हैं। अब इस ओवर में दोनों खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जरा पाँव को दबाया जाए, बाउंड्रीज लगाई जाए। एक बार फिर गैप पूरी तरह ढूंढ नहीं सके, 1 रन का और इजाफा। पिछले ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई थी, इस ओवर में भी अभी तक कोई बाउंड्री नहीं आई। बहुत ज्यादा क्यूट होने की कोशिश की, फाइनल के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन फॉलो करते चले गए अच्छे एंगल के साथ। मोहम्मद फैजान 19 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, 104 पर 1। अभी अच्छी खासी इनकी बैटिंग लाइनअप मौजूद है और इसलिए अब कोशिश यहाँ से यही होनी चाहिए कि एक ओवर में ये 2-2 बाउंड्रीज की कोशिश की जाए। उम्मीद यही है कि इसके बाद तैमूर सुल्तान खेलने के लिए आएंगे जो बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। ईशान मलिक जो हैं ज़्यादातर वही खेले नंबर 4 पोजीशन पर। अली इमरान की अदम मौजूदगी में वो अभी पूरी तरह फिट नहीं हो सके। लेकिन नासिर नवाज जो है, नासिर नवाज जो है, अब जाहिर है कि इनको ज़रा ज़्यादा सर उठाकर चलने की ज़रूरत है। अभी गैप्स मिल नहीं रहे बाउंड्री पर। ये बहुत ही वेस्ट इंडियन स्टाइल प्ले किया था नासिर नवाज ने। अच्छी इनिंग रही है, हार्ड फॉट इनिंग रही है। वक्त लिया, आउट ऑफ फॉर्म थे, फॉर्म को सर्च करते रहे और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता रहा अपने शॉट्स खेलते रहे। और यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि अगर फॉर्म नहीं है आप इंतज़ार करते हैं बुरे बॉल का और जब आप सेट हो जाएं और आप हर तरह के शॉट मार सकते हैं। और ये एक शानदार इनिंग नासिर नवाज की जानिब से। सेंट्रल पंजाब की नजरें दूसरी जानिब अहमद दानियाल पर हैं जो अच्छे स्ट्राइकर हैं और आम हालात में इन्हीं ओवर्स में आकर ये जो इनका दूसरा स्पेल होता है इसमें ये विकेटें भी लेते हैं। ज़्यादा तेज़ रफ्तार बॉलिंग भी करते हैं। डेथ बॉलिंग में ये उभरते हुए सितारे हैं। कल इन्होंने मैच का 5 पलट दिया था सिंध के खिलाफ। जी हाँ, मेरे प्लेयर ऑफ द मैच तो कल के मैच के यही थे क्योंकि जिस टाइम पे ये कल बॉलिंग करने आए थे मुश्किल वक्त था, सिंध के बैटर सेट थे लेकिन कमाल का कमबैक करवाया टीम को। यॉर्कर अच्छा करते हैं, बाउंसर बहुत तेज करते हैं, रिस्ट मारते हैं और हार्ड लेंथ यूज करते हैं। फिर उठाकर खेला, इस बार भी 1 ही रन मिल सकेगा। यहाँ इनको मैन ऑफ द मैच कल दिया जा सकता था। कासिम अकरम जो हैं वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार थे। जिस तरह की निस्फ सेंचुरी उन्होंने क्राइसिस में बनाई थी, बड़ी तेज तरीन निस्फ सेंचुरी थी कप्तान की मिडिल ऑर्डर में खेलकर तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट पर। लेकिन एक मैच के जो 2 मैन ऑफ द मैच हैं, या क्योंकि ये टर्म जो है प्लेयर ऑफ द मैच की है, प्लेयर्स ऑफ द मैच की नहीं है। तो यहाँ हमने एक से ज्यादा बार ऐसा देखा है, शायद 3 से 4 मरतबा जब 2 खिलाड़ियों को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? अली देखिए, पार्शली मैं इत्तेफाक कर सकता हूं, लेकिन या तो ऐसा हो कि दोनों प्लेयर्स ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई हो तो हम कह सकते हैं। कासिम अकरम डेफिनेटली इनका तो बनता ही था क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन अगर हम आमिर यामीन की बात करें तो क्वेश्चन मार्क है, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनसे बेहतर बॉलिंग शायद अहमद दानियाल ने की थी। तो मैं
इत्तेफाक कर सकता हूं कि अगर तो दो प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच चेंजिंग इनिंग्स खेली है तो आप दो को दे सकते हैं, बट ये हमारा फैसला नहीं है, जिनका फैसला है शायद उन्होंने यही बेहतर समझा। क्योंकि रावलपिंडी में एक मैच नॉर्दर्न की टीम ही खेल रही थी बलोचिस्तान के खिलाफ और हसीबुल्ला ने उस मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई थी, सुहेल तनवीर ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई थी। हालांकि उनकी टीम हारी हुई थी, वहां पर भी दो खिलाड़ियों को ही, सुहेल तनवीर और हसीबुल्ला को मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच कह दिया गया। तो एक तो जो टीम जीत रही होती है आमतौर पर प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो पहला हक उसी का ही होता है। और फुल टॉस, ये चली है गैप में, ये एक टिपा गाती हुई निकल गई, कोई मौका नहीं था न्याजी के पास और ये सजावार थी। यॉक करने की कोशिश की अहमद दानियाल ने। यहाँ बहुत कम देखा है हमने कि अहमद दानियाल एक खराब बॉल करते हैं, और ये बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जेंटल फुल टॉस जिसे कहेंगे, कहीं भी खेल सकते थे। एक्स्ट्रा कवर का इंतखाब किया और शानदार तरीके से 4 रन हासिल किए। शोएब मलिक जो हैं वो बहुत पेश रहे हैं इस सारे टूर्नामेंट में, अपने बॉलर्स के बहुत करीब भी रहे हैं, मिड ऑन मिड ऑफ से वो पहुंचते रहे हैं बॉलर्स के कानों तक। ये ज्यादा बेहतर लेंथ थी, पर दूसरे रन के लिए वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन ये महंगा ओवर रहा। 11 रन्स इसमें हासिल किए नासिर और उमर ने 115 पर 1। आमिर जमाल आज नहीं है, सुहेल तनवीर जो है इन दिनों हिटर का किरदार भी अदा करते हुए नजर आए हैं। क्या बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली मुमकिन है? यहाँ बिल्कुल सोचा जा सकता है, जिस तरह की शानदार फॉर्म हमें दिखाई है सुहेल तनवीर ने बैट के साथ, बिल्कुल सोच सकते हैं। लेकिन जब आपके पास टॉप ऑर्डर बैटर मौजूद हों, जैसे जिशान मलिक का जिक्र किया आपने, तो मैं यही सोचूंगा कि अभी इतनी शायद जरूरत ना हो, क्योंकि जिशान मलिक अच्छी हिट मार लेते हैं, तो शायद अभी आप रेगुलर के साथ जा सकते हैं। लेकिन आखिरी अगर 2 ओवर हो तो बिल्कुल आप सुहेल तनवीर का चांस ले सकते हैं यहाँ, लेकिन स्ट्राइक रेट यहाँ से बेहतर करना होगा। उमर अमीन जो हैं 25 गेंदों में उन्होंने 26 रन बनाए हैं। नासिर नवाज इस पार्टनरशिप में 31 गेंदों में उनके 36 रन हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट भी जो इस पार्टनरशिप में है वो उस पाए का नहीं है जो होना चाहिए था एक सेट बल्लेबाज का। हालांकि 47 गेंदों में जब आप 61 रन की इनिंग्स देखेंगे तो आप जरूर खुश होंगे। यहाँ बहुत अहम बात है सेंट्रल के लिए कि फिनिश अच्छा करना चाहिए। 5 ओवर्स हैं, प्लेटफॉर्म ऑल्दो सेट है नॉर्दर्न के लिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि सेंट्रल को ये चेस करना है टूर्नामेंट में रहने के लिए, और अच्छे तरीके से चेस करना है, अपने नेट रन रेट को भी देखते हुए चेस करना है। तो उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम रन यहाँ से दिए जाएं। अच्छे यॉर्कर कर रहे हैं, बिल्कुल भी ब्लॉक हॉल से ये स्ट्रोक खेलना इतना आसान रहा नहीं। कासिम अकरम और शोएब मलिक दोनों ऑफ स्पिनर्स ने बॉलिंग नहीं की कल सिंध के पास, खास लेफ्ट हैंडर्स से, तो ये दोनों बड़ी जल्दी आ गए थे नई गेंद पे ही। ये बहुत लकी होता है कैप्टन जैसे कि कासिम अकरम है कि इतनी वैरायटी मौजूद है बॉलिंग लाइनअप में। फास्ट बॉलर्स शानदार हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेग स्पिनर भी हैं जो आज नहीं खेल रहे हैं। जब आपका इतनी वैरायटी होती है तो चॉइस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप डिफरेंट अपोनेंट्स के अगेंस्ट डिफरेंट बॉलर्स को यूज़ कर सकते हैं। आज जैसे नासिर नवाज जिस तरह के प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि ऑफ स्पिनर को बॉल दी जाए, क्योंकि रन बचाने हैं, क्योंकि सीमस ने शानदार रोल अदा किया है आज। तो यहाँ ये छठे बॉलर हैं मोहम्मद फैजान, और ये शॉट अच्छा था और उतनी आला कोशिश भी। मोहम्मद हुनैन तकरीबन इस गेंद के नीचे आ चले थे, और क्योंकि कैच की कोशिश की थी उसी में 4 रन जरूर हो गए।
लेकिन ऐसी सोच होनी चाहिए विकेट लेने की। या ऐसे मौके पे कैच छोड़ देना ये बहुत मसाइल का सबब बनेगा सेंट्रल के लिए। और एक्स्ट्रा कवर पे न्याजी मौजूद हैं और आपको मालूम है कि हुनैन का इतना अच्छा दिन नहीं गुजरे इस टूर्नामेंट में, फील्डिंग थोड़ी एवरेज साइड पे रही है। तो जब आप इतना क्रूशल मैच खेल रहे हैं तो आपको बेस्ट फील्डर्स आपके मेन स्पॉट हॉट स्पॉट्स पे होने चाहिए और लॉन्ग ऑफ एक हॉट स्पॉट है। अब शायद न्याजी को चेंज किया वहां पे। फुल टॉस, ये सीधी जाएगी न्याजी के हाथ में जो गलतियां नहीं करते वैसी जैसे सेंट्रल पंजाब के दीगर आउटफील्डर कर रहे थे। उन्होंने इत्मीनान से इस गेंद को अपनी हथेलियों में आने दिया और मिलाकर ये पार्टनरशिप खत्म हो गई। उमर अमीन आउट हुए। यहाँ फुलटा से बहुत जोरदार शायद एक्स्ट्रा कवर की तरफ ढूंढ रहे थे लेकिन फील्डिंग चेंज की हुनैन की जगह, न्याजी को खड़ा किया, अच्छी कप्तानी और विकेट हासिल की। ये बहुत अहम विकेट है क्योंकि उमर अमीन अच्छी फॉर्म में लग रहे थे और अब ऐसा मौका आ गया था कि बड़ी हिट्स मारते। 121 पर 2 नॉर्दर्न। जीशान मलिक नए आने वाले खिलाड़ी हैं। 27 की औसत है, स्ट्राइक रेट 122 का है। लेकिन आज नॉर्दर्न एक वक्त ऐसा था जब इनके पास पार्टनरशिप भी थी, 2 सेट बैट्समैन भी थे, ये 200 के मुतालिक सोच सकते थे लेकिन शायद इनकी जो नज़र है वो 170 175 पर ही रही है। या शायद थोड़ा सेफ क्रिकेट खेल गए, ज्यादा ग्लोरी की तरफ नहीं गए कि हम 200 के चक्कर में कहीं और पहले ना आउट होना है क्योंकि एक मैच के बाद अभी और खेलना है। डेस्परेट सिचुएशन सेंट्रल के लिए है, नॉर्दर्न थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि एक मैच अभी इसके बाद खेलना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इजी नहीं लेना चाहिए सिचुएशन को क्योंकि क्वालिटी क्रिकेट है हर तरफ। ये लग इसमें खासी बाहर थी, काफी दिलो जान से ये स्पेल किया है मोहम्मद फैजान ने। इस ओवर में उन्होंने आउट किया, यॉर्कर करने के लिए गए, फुल टॉस को नहीं खेल सके गैप में उमर अमीन और न्याजी ने अच्छा तेज कैच लिया आगे जाकर एंटिसिपेट करते हुए। 16 ओवर्स के बाद 121 पर 2। Just 4 overs to go. Northern hasn't been able to accelerate despite having wickets in hand. Swinging like a rusty gate. Nasir Nawaz been well set. 48 deliveries. That slow delivery completely bamboozled him. He's miles away from the ball. Ungainly, say the least. Ahmad Daniel once again is having a very, very good day. Nice pick up and rewarded for it as well. He's been struggling a touch with the fuller length, but he's picked this one up well. Just got underneath it at the right time. Wrong line, but look at that ball tailing in just a little bit. Nasir Nawaz is a very strong player. Just
The roll of the wrist behind square for a 6. Northern needed that kind of push because last few overs haven't brought many runs for them. Anything less than 180, they should be disappointed, the kind of platform they had earlier. Shorter length. He's been mixing it up, Ahmed Daniel. Marina pointed it out that it's not his comfort zone, Nasir, if a fuller ball comes to him. So that's what's been adopted. He was quite short and quick in his length, Daniel, yesterday, but today he's been bowling fuller, especially to Nasir Nawaz. And you were talking about that the acceleration. I think the Central Punjab fielders have done very well. And it's about stopping those boundaries or trying to stop those extra runs. That keeps putting that pressure on. And a very crucial stage, Omar Amin has been dismissed. At this juncture of the game, he could have really accelerated. Now you got a brand new batter at crease. He's yet to get off the mark. And he doesn't have much time because in the 17th over, it's touch and go for him. You see how he is already prepared in his mind that he's going to swing his bat. A slower ball, and he's nowhere near it. Daniel mixing it up very nicely. Yesterday's strength was his short pitch bowling and pace. Today, he's taking the pace off. Completely foxed Zishan Malik. Swung way too early. Not easy to start at this stage of the innings and go looking for boundaries straight away. Let's make room and then playing that one. But you got to give it to the Central Punjab bowlers. They've been 85% accurate. And it's not been easy to put the ball away. The ICC Deaf International Cricket Champions Trophy 2022 starts 1st of October and goes up to 9. You can see the flags there. The country is participating. It's happening in the UAE, United Arab Emirates, the hub of world cricket at the moment. Daniel wants his straight fielders really straight. The long on, long off fielders are very, very straight. Full and straight, probably that's what he's aiming for. "17 gone, 130 for 2. Raheel Nazir has been demoted. That's been the problem. We discussed this in the pre-show. They've just not decided a number for him. And that's probably his undoing. Taimur Sultan in the side, so Mubassir Khan, look where he's gone. And I don't know if this is the batting order, because our guy has got his own batting order. Of all people, Suhail Tanveer may be in next. Has he got all of it? Sure he has. They needed it. Nasir Nawaz just creating his own room and hitting it straight back over the bowler's head. Yeah, they've got to pick a bowler somewhere, and maybe Faizan is the right choice. He tried to follow the batter, but he kept making room for himself to swing the bat, and very straight. Come and landed right below us here. Low full toss, again straight hit. This time should be a boundary. This is a good start to the over. 10 of the first 2. This is the over they want. They were in desperate need of a big over. 10 of 2. Faizan has become a little predictable. He's been looking for those full Yorkers. Missed his length on both occasions. And Nasir Nawaz, good enough. Irfanullah Niazi, he tried his best.
Not enough. Quick word from Shoaib Malik to the bowler. He's basically been telling them what to do. He's the hidden commander-in-chief of Central Punjab. We're telling him not to be predictable. The batters are ready for your plan. Come up with something different. Or maybe he said, you get hit one more time, I'm not giving you the ball again. Well, it's a difficult time to bowl, so not many bowlers will be queuing up for a ball at this stage, especially with 8 wickets in hand for Northern. Got to be brave to ask your skipper, you want a ball at this stage of the innings. He's been controlling things out there since last evening. Match against Sindh. And again straight, but there's nothing on it. This length to the newcomer, who's not in yet. Zishan, he's swinging his bat. A lot of huffing and puffing, but end result just 2 of 4. The best thing happened for Northern because Nasir is back on strike. Fine leg is up in the ring. Third man is up in the ring. Good comeback after being hit for a 6 and a 4. 3 singles then. And they extract one more of the last delivery of the 18th over. Zishan is probably just looking that he can afford to just go after the bowler because they've got plenty of wickets in hand. Take a chance. Pretty strong on the onside, Zishan. That's a good finish to the over. 144 for 2. Amir Yamin has 1 over left. Faizan has got 1 over. I don't think we're going to see Ali Asfan. Waqas has bowled out. Who would you go with, Sikandar? Amir Yamin, Faizan to finish it off, or something out of the box? Amir Yamin will surely get 1. And then maybe Hunain. Ahmed Daniel is also done, and so is Waqas Maqsood. A bit of a meeting going on. Who bowls the last? So probably Hunain will get this over. Maybe Rashid Riaz can also help. Who can bowl a better penultimate over? Amir Yamin finally gets the vote of confidence. Well, Qasim Akram agreed with what you said. Amir Yamin will definitely bowl 1 over, you said, and he's made sure he does. Rashid Riaz's concerns would be about the timekeeping because Central Punjab has taken quite long to bowl their 20 overs. 12 deliveries. Could they get up to 170? That'll be the question. Yeah, the minute he hit that, he said catch. And gone. Shoaib Malik takes it. Amir Yamin's got the experience. Those full tosses, whoever says could have hit it anywhere, is just not that easy. And Zishan Malik was struggling to put the ball away. So maybe blessing in disguise at this point of the game. It wasn't a clean hit at all. Look at how far inside the fence it landed in Niazi's lap. 20 yards in. Zishan Mizri has come to an end.
Malik caught Malik, bowled Amir Yamin. 144 for 3 Northern. Nasir on strike. That should be taken. And 2 on 2. Amir Yamin dismisses Nasir Nawaz. Not worried about the wickets. It's about the dot balls at this stage of the game because the 19th over. Well, I called the last one that it landed in Niazi's lap. 1 ball later, it does actually land in Niazi's lap. Zishan Malik flicked it. Good running catch. He really anticipated it very, very nicely. He's a good outfielder. Safe pair of hands. And a huge wicket at this stage. Amir Yamin will be on a hat-trick. But Nasir Nawaz played beautifully for his 82. Northern losing wickets at the wrong time. 144 for 4. They had a good start. They slowed down in the middle somewhere. It's just the finishing ability is just missing for Northern. Can they do something special here in the remaining 10 balls that they have? On a hat-trick, Amir Yamin. Now that's smart. Well, you just cannot find a replacement for what? Experience. A little smile on his face as he walked up to Amir Yamin. Slow delivery, he just guided it past third man with an angle bat. This is delicate touch. All those years of experience. Northern badly needed this. Yeah, he's like, what's all the fuss about? Why are you guys swinging your bat here and there? Just touch the ball. No, 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 no. Played well, Nasir Nawaz, for his 82 of 57. Is how he was dismissed. Look at Imran Niazi in the background. Irfan has just come and taken that catch. You know, he's created that. He's actually ran towards it. And that's how it's landed in his lap. They have been very good, Central Punjab, because they have made sure those extra bit of runs don't come about. We've seen plenty of drop catches last 2 days, but Central Punjab made sure there was none of that today. Their catching has been splendid, and that's why they are in a pretty good position with 8 deliveries to go. What a good over this is. What a brilliant over. 2 wickets. A boundary came about with a delicate touch, but then a leg by and a dot. Suddenly, it's over with 1 ball to go, has only given them 5 runs. Death bowling used to be a problem for Amir Yamin. He's been a revelation in this tournament. He's took the responsibility, being the senior man. He's delivered quite often for this Central Punjab team at the death overs. Just looking to further his career by adding those skills. Catch it, and 3 in and over. They're going to check the waist height, but he's got 3 from what we see at the moment. Just have a look again from the third umpire if it was above the waist. But he was bent down while playing that shot, so he will probably not get the decision in his favor, the batter, Mubassir. Once we have another look, I think Mubassir pretty much knows his fate. No problems here. Mubassir was almost down on one knee. Look at that.
probably won't give you a good idea about the height. That's better. Call it Sikandar. He's bending low. He's not at his maximum height. He's bent. His knees are bent, so he gets away the bowler. It won't be a no ball. Out. 19 gone, 149 for 5. What an over that was. 5 runs and 3 wickets. Amir Yamin didn't have a wicket, but in the last over, he grabs 3. Finishing 4 overs, 29 for 3. Or 3 for 29, as we say. 6 balls remain. Shah Faisal, what's your call? They are not having enough runs on board. They bowled so well on a good batting pitch. Definitely, this doesn't seem enough. 170 would have been a minimum that they would be aiming for. After that platform they had, remember they had 74 in 10 overs with just 1 wicket. They could have got up to 100 runs in the last 10 overs, which is not a huge call in this day and age. That would have taken them to 174. Anything less than that. Did we see a change in the wicket? I didn't see that. I think this wicket is decent enough. Central Punjab bowled and fielded really well. They took their catches. Oh, that's a no ball straight away. He doesn't need to consult anyone. He's got to probably apologize. I'd give that 5 free hits. 150 comes up for Northern. First and final warning. And that's the first and final warning as well from umpire Asif Yaqub for dangerous bowling. It was dangerous indeed. If he bowls another one, that'll be his work for the day. Sohail Tanvir really caught by surprise. It wasn't even chest height, right at the temple. You see that the ball's really not coming on. Again, well, you can say that he's facing, what, the 3rd ball in his innings. But he felt that it could have had a better connection, Sohail Tanvir. It was a free hit. It wasn't a full throttle delivery as well. Mubassir really collapsed on his back knee. That made sure he had no balance, so he was in no position to go for that big strike. You need a solid base at the crease. And Mubassir certainly didn't have that. Worried looks for Northern. Who almost took his ear off. Onen did well to get out of the way in his follow-through. That was hit hard by Temur. It whistled past his ears. Didn't think he knew too much about it. He's ducking for cover. It could have been so dangerous. Lucky that wasn't in line with his follow-through. Wow. 150 has been brought up in the meantime as well. How much more can they add in the remaining 4 deliveries? This one is picked up by Sohail Tanvir. Maximum. That's what he was eyeing on the delivery he faced earlier, which was a free hit. That's inexperience. You don't want to bowl there to Sohail Tanvir. This is his favorite area and has been forever. Right in the slot. Pace off, but plenty of pace off the bat. Roll back the ears. Plenty of famous 6s in that direction from this man. Brought a smile to his face. Three more balls in the innings. This time through cover.
Can they run two? And they're going for it. Throw has to be good. And they make it. It's poor cricket all round. Sohail Tanveer turned blind. He had no idea what was happening. It's just lucky that Tayyab Tahir's throw, who normally is very accurate from the deep. He scored some famous direct hits from the deep. On this one, he's completely lost it. Look how wide the throw was. Sohail Tanveer was nowhere in the picture. All that for just 2 runs. 2 deliveries to go. 160 on board. Has taken the outer edge. So just a single. It's over now. 12 runs. 1 ball to go. Overall, you should admire the temperament of young Hanan Shah, because remember, he hasn't played a lot of cricket at this level. Bowling in the death is not easy. 3 overs, 1 for 25. Taimur Sultan, making the first appearance of the season, will face the last delivery. Anything that he can get from here will be a bonus for his side. Last ball of the innings. That's a good ball to finish off. They're coming back for the second. They will come back for the second. There's no point staying back. But they do. Should have taken the chance on the throw. It was a good throw in the end. But Northern will be disappointing, because the platform they built in the first 10 overs, they couldn't really capitalize on that. Couldn't really flourish and put the accelerator. 162. On the face of it, you'll feel that they're at least 10 to 15 runs short. But what do we know in this game of T20 cricket? They bowl and feel like Panthers. They may just still end up on the winning side. It's close to the scores that we saw yesterday. We'll have to wait and see how good this batting pitch is, if it's going to be chased down easily. But they've done very well, Central Punjab, in keeping the opposition around 160 mark. And this is the batting. I think somewhere they started off very well with the openers. Nasir Nawaz was good, 82 of 57. Umar Amin's wicket that fell at a very crucial stage of the game in the 17th over. Zishan Malik played 1 over. He was struggling. And that is where the problem is. In the last 3 overs, they just couldn't accelerate as they would have liked. Once again, Central Punjab's effort was good. Their fielding was excellent. Amir Yamin once again star with the ball, 3 for 29. Ahmad Danial and Mohammad Faizan, their spells were crucial towards the death of the innings, and they really didn't go for many. Excellent bowling and fielding display from Central Punjab, which is a must-win game for them. Well, let's have a look. Northern won the toss and decided to bat first. You feel they are 20 short. The power play was good for them, with Herrera and Nasir Nawaz playing shots at will, especially square of the wicket on the offside. Quite a few runs. Asfan was expensive. Whenever he came out, they attacked him. They were getting boundaries in the power play. Almost every over was being attacked. Around 57 was scored by them. The two, Herrera and Nasir Nawaz. This was a half-hearted shot, and that's where the partnership was broken. Herrera went. Then Umar Amin and Nasir Nawaz formed a partnership. It was a good partnership, a rebuild. They're keeping wickets intact, planning to use the remaining 9 wickets to slog and to hit big in the last 5 overs. But you do feel whenever they wanted to go or accelerate, they weren't allowed because of some good fielding and some excellent planning that they had done, bowling fuller lengths. But eventually, look at that. That's the effort we're talking about. This is what they were putting in the field. And once in the 17th over, we saw Umar Amin's wicket. That is when things started going downwards for Northern. A full toss right down to the throat. Is the phase where boundaries were few and far between. Nasir Nawaz kept trying. 10 of 2 deliveries at one stage, but then life
taken out of the innings by this Amir Yamin over. 3 wickets and not many. Shoaib Malik took a catch, and then Niazi with a good running catch. That was the only boundary that came off of over number 19. But really was overawed. That big blow took Northern past 160 thanks to Sohail Tanveer. But Central going into the break will be a happy side because So the target is clear. And here we are, 163 is what Central Punjab needs to win this. And win this quick because they need the net run rate as well. We'll take a break and we'll be back. Welcome back to the Multan Cricket Stadium. Central Punjab versus Northern, match 27. Let's have a look at the batting card. How Northern won the toss and put up 162, riding on 82 of 57 from Nasir Nawaz, a 31 from Umar Amin, and Hurera getting 20. Yeah, Qasim Akram would be very proud of this bowling lineup.
Very well bowled by Amir Yamin, especially with the new ball, and then taking 3 wickets with that old ball. 1 wicket for Hunensha, 1 for Fazan, and restricting Northern to 162, which could have easily been to 180. But they did well in the end, this bowling unit. For a moment, I thought he forgot to take his cap off. But we're still far away from the game. Zaman Khan is there. Sohail Tanveer is there. We've got Salman Irshad included in the side. Nasser played a good knock today. But you got to give it to the Central Punjab bowlers, especially the fielding. After a good power play, they got their act together and did not allow Northern batters to score as freely as they would have liked. The 2 umpires, Asif Yaqub, Rashid Riaz coming out. They were pretty adamant that too much time has been taken by Central Punjab to finish off their 20 overs. We've got to speed things up. Another game lined up after this between KP and ATF Southern Punjab. Let's have a look at the points table as to where we stand halfway through in the match in 27th game. And now KP plays the next one. They've got 2 more games left, including the one which is coming in the evening. They've got 10 points, so they have the opportunity to take it to 12 and be comfortable to make it to the semi-finalists. Since we'll have to sit and wait for a while. Balochistan also has their last game lined up, which is tomorrow. Northern, they have 2 games, but they should win and get to 10 first. Now Central playing their last game, net run rate is something they will be worried about. Even if they win this one, they have to win it big. They have to chase down this total of 163 in quick time. Rashid Riaz, this is what he's mentioning. Hurry up, we got a game, next one lined up. But Northern are taking their time. They would like to win this one and get those chances to qualify for the semi-final spot. It's a good effort. Nasir Nawaz played a very good inning of 82. But that middle over that we have seen, that Central Punjab really bowled well yesterday, even also today. Pulled back things. It could have easily been 185, 990. But Central Punjab must be very proud of this effort. On the other hand, it's up to these 2 batters, the 2 hard-hitting batters. Clark back at his favourite place, that is opening the inning alongside Fazan. Yesterday it was Abdullah Shafiq opening, but now they've a change in plan. Clark been promoted, that means they're going to go after these runs in a quick time. People have come in good numbers, especially in the evening games. Today we're seeing some more in the afternoon. Multan enjoys a Friday afternoon because usually they feel it's almost a weekend. Akhlaq has come at the opening slot. That's one concern of mine with Central Punjab. They keep swapping and chopping and changing in their opening or top 3. He came at 3 yesterday, now he's coming in the opening slot. Make up your mind. Fazan is there. He will be key. Couldn't get runs yesterday. What I'd like to see from any side who are bowling and defending, if you get quick wickets, we've seen that yesterday, 4 wickets fell in no time. Squeeze the opposition out. You see that certain level of complacency sets in the fielding unit, and then you end up giving runs away. You don't win a match with 4 wickets down. You need to bowl them out if you want to win it. Sohail Tanveer, with his experience, will now bowl the new ball. You have to look out for him with the new ball especially. 163 required at 8.15 runs and over. Rashid Riaz says play. Sohail Tanveer is off. Yeah, for Central, a lot will depend on these 2. They need a good start. They need a quick start. They need to utilize the 6 overs because they need to win it and win it big.
They need to improve on that net run rate also, because I have a feeling it's going to come down to that net run rate by the end of these round games. And these are two ideal batters to be batting up the order to utilize those 6 overs. It's not going to be easy, but the thing that goes in their favor is the pitch. It is a beautiful strip. The ball is coming nicely onto the bat, so they will fancy chasing down this total. Important that they field well, Northern. There were a few mistakes Umar Amin had shared with us in the post-match presentation. Certain areas they need to look at. And when you're trying to get into the semis, then there's no room for errors. You're competing against the best. You've got to be the best. They would surely be missing Amir Jamal. Not just his bowling, but his fielding, especially his outfield fielding. He's been brilliant with those catches. First runs for Central Punjab. And they open the account with a single. Suhail's not happy. A single with 5 men inside the circle. Good cricket by Faizan. Soft hands. Look at that, soft hands in the gap and called straight away. That's the right way to do it. No confusion from both ends. Abdul Razak, a tense Abdul Razak I would say at the moment, because first they have to win it and win it at a good rate. So 2 targets for Central. Yes, it's a middle stump. He needs to play with big knock. Can't just play 20 runs and go off. Yeah, that's why I said earlier that it might be a good toss to lose for Central Punjab, because now they have a target in front. They have to chase down this 163. If they do it inside 18 overs, they'll move to number 3, and that will most likely take them to the semi-final spot. That is what they're hoping for. That's their tournament journey so far. It's been mixed. They didn't start it off nicely, but as they come to Multan, they found that momentum. They found that playing 11, that combination right, and it is working for them. And now they're in a position where they can qualify for the semi-final. And gone. First blood. Just poking at that off-stump line, and Akhlaq has to walk. That's been the issue. Central Punjab are 1 for 1. Sohail Tanveer is such a brilliant new ball bowler. Just with the angle, that was not the right choice of shots. Even he had no choice though. That is a big blow for Central. A lot was expected of Akhlaq, that he will give that early good start. Lost his wicket without scoring. It's 1 for 1. Tayyib Tahir, the new batter in. He's half their batting. You get Tayyib Tahir out early, and there will be problems in that dressing room and here in the commentary box. There's a big supporter of Central Punjab sitting next to me. I love the way he plays, Tayyib Tahir. 629 runs. The strike rate of 141, that is the most impressive part of him. And he's played at different numbers, that's the quality. Oh.
End of a successful over. 1 for 1. Yeah, just no feet movement whatsoever by Clark. The ball went with the angle. No chance for him to survive that delivery if you're having that sort of footwork. Sohail Tanveer is so experienced. He knows how to bowl. He knows how to get wickets. Wonderful. 1 for 1. Thank you, sir. Salman Rashad has been included in the side, replacing, well, you can say Shinwari or Amir Jamal, either. Bit of movement, but it's too full. Nicely driven away. Faizan gets a boundary, so does Central Punjab. Too full to start off for Salman Rashad. And the type of form Faizan is in, he's not going to miss out on this length. Look at that, easy. Although it was in the air for a little while, but safe, away from the fielder. He'll take it. Look at that, it's just in the air for a little while. It's a good way of going about with the chase. When you get a ball that's available to be hit, get a boundary, otherwise rotate the strike and get to the other end. That way the scoreboard keeps moving. It also creates a balance in your innings. You're not trying to hit everything out of the park. But as a batter, when you're just probably facing 4 dot balls and then a 6, you're frustrating your non-striker as well. Then he tries to cover up. Oh, that's a beautiful ball. First ball up front. It's swinging. Look at that. Scored him up. That is a fantastic start. This is what we would like to see from a Northern's point of view. Early wickets. They've got one. They would like to see the back of Tayyib Tahir too from here on. Because if they can get Tayyib Tahir out, that will be a big blow. .385 runs for Tayyib Tahir in this tournament. The leading run scorer. Phenomenal. He's been an excellent touch. Just the way he plays, just marvelous way. He's not shy, he's not scared, he's not afraid of playing those big hits. Whenever given the opportunity, he plays the spin equally well. Consistency is important. Ball such a beautiful ball, pitching off stump and just moving away, and then you ball one in the leg stump. Got a slip in position. We're just talking off here, thinking how many catches have we seen in the slips in this tournament? Hardly any. The ball has bowled such mixed lengths. That's a huge vacant area on the onside, and that length is always going to have the ball being played in that zone. 2 overs, 8 for 1. Bats are coming on. They come on pretty early. Wide ball. They take a little bit of time to warm up. First extra.
Umar Amin has got a job to do. He needs to make sure that he picks the right bowlers, because Central will go after them. Although it's a very careful start at the moment, just 9 runs of 2. But they're a very dangerous side, and they're in a hurry too. They need to chase down this score in 18 overs to go up the order in points table. Shot. It's just length. He's bowled it wide outside the off stump. First one was a wide down the leg side. New ball, circle limit. You put bat to it. There's a high chance you'll earn a boundary. Too much width given. That's a rare bad delivery by Sohail Tanveer. And he's been punished for that. Because this is such a good pitch. You can play through the line wherever you want to. If you're given this delivery outside the off stump, you're always asking for trouble. That is a good start by Faizan. They would want him to play a blinder here. He has the potential to do it though. That's better. Yeah, sometimes it happens when you're in a hurry, you mess it up big time chasing down this total. So first they should make sure that they're in a safe position and then look for glory. You don't want to be losing the game in a hurry. 18 overs are enough overs to get to that 163 runs. They've got everything calculated. Mansoor Amjad also there with that book. Mai or Farad, Razak, everyone there. They're concerned. They know every equation of this game. Dealing in singles at the moment. That's the boundary. He's back, he's here. Ali Imran, right off your screen, was injured. And Rawalpindi Lake, we didn't see him in action, but good for Northern that he's joined the team. You might see him in action. He's an excellent player. There's a gully in place. No slip though, just the gully. Yeah, they worked Tayyib Tahir because they know that he has this habit of playing towards that gully area, and they've put the fielder there. That is good captaincy by Umar Amin, because they know that this is an important wicket. Now that's what you call homework and planning. We've seen him getting squared up twice. He's hoping that he gets that leading edge somewhere in that zone. And if it even doesn't go, it just plays in the back of the batter's mind. He's tidied things up, Sohail Tanveer, after that boundary and a wide with the first 2 deliveries. Yeah, you made an excellent point. Just to put that in his mind that we've got a fielder place there where you like playing. So be very careful. They're forcing him to make a mistake. Place the other side, not to your strength. So that is good strategy, good planning by Umar Amin and the camp. Good over that. Single to end the over. It's 15 for 1.
15 for 1. It's a careful start. 3 overs have gone by. They're going at 5 runs and over. Bowling change. The problem with the Northern has been their death bowling as well. Yesterday we saw Zaman and Shinwari going for runs. Today there's no Shinwari. Zaman will have to continue with this accuracy which Sohail Tanveer and Salman Irshad started off with. Because 5 and over is good for the fielding side. But they will also target somebody somewhere. Slips removed now. Mid-wicket will come in. That's the region. They had it plugged in the previous over with Sohail Tanveer bowling. Yeah, that's a lazy effort by Salman Irshad. He was so late to react. The ball travelled quickly to him. It was in the gap though, but still it travelled quickly. Tayyip Tahir is a good runner. He's a strong boy. Look at that. Took him a lot of time to get to the ball. Slow in reaction. I think the role is defined for Tayyip Tahir that he has to stay in, because as long as he stays in, runs will come at any moment, and it's up to Faizan to score those quick runs, and he has delivered 3 boundaries already to his name. 163 is not a big total if you look at the pitch. They would fancy it. Salman Irshad probably will come back in the later stages of the inning. He's a good death bowler. Chance. Oh, direct hit. But the other end was the one where probably could have gone. Because the hesitation was from the striker, not the non-striker. Yeah, they realized that it's Sohail Tanveer who's not 100% fit. They can take the chance on him, but we got to be very careful. He may not be fit, but he's very experienced. Look at Tayyip Tahir. He waited, then realized there was single available. He's safe, he's home. Straight and big. That's the first maximum from Central Punjab. That's what I said at the start. Zaman will have to bowl accurately. Cannot release too many runs. That is a Tayyip Tahir special. This is where he likes, this is where he loves playing. And I had a feeling the last time he played that he's searching for this shot. Look at that, just cleared his left leg. The ball was in his zone, in his region. Look at the power, just travelled all the way. Wonderful hit. This boy is mighty talented, I tell you. That should be 4. Oh, it's a good stop by Salman. Sliding. That ball was travelling, I tell you. That's good work by Salman Irshad. Certainly saved 2 runs. But it was travelling. Again, they had that gully fielder earlier that removed him. And that is where exactly the ball is going a couple of times now. That is a good effort. Top effort by Salman Irshad. That's pulled away. Is that all the way, or is it the one bounce? 6 given by the umpire. So that's an expensive start from Zaman. 18 of it, 33 for 1.
बड़ा ओवर सेंट्रल पंजाब के खाते में। जमान खान 18 रन दे बैठे और अब कुछ हलचल मच गई है। फैजान और तैयब ताहिर दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में, रन बनाना जानते हैं ये दोनों, और जिम्मेदारी अब मेहरान मुमताज को दी गई। ये मेहरान मुमताज जो है ये स्पिन बॉलिंग का इन्हिसार यहाँ ज़्यादा इन्हीं पे रहा है नॉर्दर्न का इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ज़्यादातर खेलते हैं। और मेहरान मुमताज ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छा बॉलिंग एक्शन है और फ्लाइट दी और पहली गेंद पर ये विकेट ले गए। गेंद को हवा दी और ज़्यादा ज़ोर से हिट करने चले गए, और कहते हैं कि स्पिनर को कभी स्ट्रेट ड्राइव नहीं करना चाहिए, यही गलती की फैजान ने। आते ही ब्रेक थ्रू दिलवा दिया मेहरान मुमताज ने। विकेटों का कॉलम इनका अच्छा खासा रहा इस टूर्नामेंट में। हवा दी थी लेकिन बहुत दूर से खेल दिए। कोशिश इनकी ये थी कि बॉलर के सर के ऊपर से मारते, लेकिन खुशी और गुस्सा भी मेहरान मुमताज का। ये अच्छी विकेट है, ये पार्टनरशिप महंगी साबित हो सकती थी। फैजान 13 रन बना के वापस, 33 पे 2 सेंट्रल। शोएब मलिक से आज पहले कासिम अकरम ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। कल जो फॉर्म इन्होंने दिखाई थी, ये चाहेंगे कि आज भी उसको कैश कराएं। तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से ये बैटिंग करते रहे। कासिम अकरम 19 बरस इनकी उम्र है, अभी तक ये इब्तदाई अयाम है T20 क्रिकेट में, और उनके करियर में भी अच्छा स्ट्राइक रेट है तकरीबन 140 का। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, जारहाना बल्लेबाजी की थी, और इस रन चेस के लिए भी उसी तरह की ज़रूरत है आज। अच्छी पार्टनरशिप तैयब के साथ लगाने। शानदार शॉट, ये 4 रन्स, ये कट शॉट खेलने के रस्सियां हैं कासिम अकरम। लेंथ मिली और इंतजार किया इसका। कल भी ऐसे ही कुछ आगाज किया था, बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, पूरा बैकफुट पे जाते नहीं, लेकिन महारत रखते हैं कट शॉट खेलने में। हल्का सा गेंद बाहर को भी निकला और आसानी हो गई कासिम के लिए। यहाँ पे गेंद नहीं करना, ये आप सुन सकते हैं, रोहेल भी यही बात बोल रहे हैं कि कासिम को कट नहीं खिलाना। ये इस तर्ज के बैट्समैन हैं जो एक गेंद पर 2 शॉट भी खेल सकते हैं, जो कदमों का भी अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। एक और चौका, आला फुटवर्क और लाजवाब बैटिंग कासिम अकरम की। पिच पर पहुंचते ही उन्हें एहसास दिलाया है अपने टैलेंट का। मजबूर किया था कट शॉट खेल के मेहरान को कि आगे गेंद करें, और कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल किया। लाजवाब टाइमिंग, आपने जैसे कहा, बहुत अच्छा गैप इन्होंने पिक किया, कोई भी फील्डर नहीं पकड़ पाया। और ये टॉप एज, गेंद गैर आबाद जगह पर गिरी, एक ही रन मुमकिन हो सका। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मेहरान मुमताज बाउंड्रीज लगने के बाद भी गेंद को हवा दे रहे हैं और स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं कि विकेटों की अहमियत बहुत है, बाय करना चाह रहे हैं विकेट यहाँ पे मेहरान। इनका बॉलिंग एक्शन जो है बड़ा काबिल दीद है, और ये देखिए गेंद को सीम पर गिराया, और ये बैट्समैन की आई लाइन के ऊपर से आई थी। बड़ा शॉट खेलने के लिए चले गए, खेलने में कामयाब हुए। एक बार फिर चोटी के ऊपर से कासिम अकरम
इस वक्त बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं। पलक झपकते ही वो डबल फिगर में पहुंच गए। 5 के बाद 47/2। ये विकेट जब भी मिलेगी ये इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इस बार इतना कनेक्शन मिल गया था कि इनफील्ड क्लियर कर पाते और आउटफील्ड बहुत तेज है। गेंद इतना पीछे था नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कवर खेलना चाह रहे थे। थोड़ा सा स्लाइस जरूर हुआ, लेकिन ये महंगा ओवर साबित हुआ। विकेट हासिल की, लेकिन रन काफी दे दिए मेहरान ने। उस्मान शिनवारी आज नहीं खेले हैं। सलमान इरशाद की वापसी हुई है नॉर्दर्न की इस प्लेइंग 11 में। और पहली गेंद पर उनका पुरतपा खैर मकदम किया, चौका लगाकर फॉलो करने की कोशिश की सलमान इरशाद ने, लेकिन तैयब ताहिर को वार करने से वो फिर भी नहीं रोक सके। वार करने से वो रुकेंगे भी नहीं, जिस तरह की जारहाना बैटिंग करते हैं। 400 रन भी मुकम्मल कर लिए इन्होंने। हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं सेंट्रल पंजाब के लिए। ये लाइन अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश की। लेंथ भी आसान मिल गई थी उन्हें कि जिसका फायदा उठा सकते थे। फील्डर सर्कल में मौजूद था। थोड़ी बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी नॉर्दर्न को। कल भी हमने देखा था कि सेंट्रल पंजाब ने विकेटें गिरने की ज्यादा परवाह नहीं की थी और इनके बैट्समैन ऐसा लगता था कि हाथ धोकर बॉलर्स के पीछे पड़े रहेंगे। आज भी वही देखने को मिल रहा है। ये अच्छी गेंद है, इस पर पड़ने के बाद अपनी लाइन को होल्ड करते हुए निकल गई। दिफाई अंदाज इख्तियार करने पे मजबूर किया तैयब को। खिलाड़ियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और इनको बॉलिंग करनी कदरे मुश्किल है, क्योंकि उस तरह टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। इफेक्टिव बहुत है, रन निकालने इन्हें आते हैं। विकेटों के अंदर अगर रखा जाए तो फिर भी कुछ बचत है, लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप या लेग साइड पे दे दी तो वो रन बाउंड्री के पार ही जाते हैं। यहाँ ये अच्छी कोशिश है। सलमान इरशाद जो हैं ये गेंद को आगे गिरा रहे हैं, क्योंकि तैयब ताहिर जो हैं उनके रन्स जो हैं वो ज़्यादातर बैकफुट से आते हैं। और शुरू में अगर फास्ट बॉलर जो हैं इनके पैड्स को अटैक करने की कोशिश करें तो फ़ायदा हो सकता है या इनकी विकेटों को। बहुत ज़ोर से मारने चले गए थे। कोशिश थी कि सामने जो फील्डर अंदर मौजूद है सर्कल में उसका फ़ायदा उठाएं। और बाल बचे। ये अच्छी गेंद नहीं थी और यहाँ पर बाउंड्री मिल सकती थी अगर गेंद जो है वो 2 फीट जो है सोहेल तनवीर के दाएं बाएं होती तो ये आसानी निकल जाती। बचत जरूर हुई है। पहली गेंद पे बाउंड्री कंटेन कर ली थी इन्होंने। 3 डॉट डिलीवरीज। थोड़ा सा मोमेंटम नॉर्दर्न को वापस अपने पास लाना पड़ेगा अगर डिफेंड करना चाहते हैं ये टोटल। और गेंद हवा में है, फील्डर हैं पीछे थर्ड मैन पर और ये कैच मिसाली। जमान खान वो थर्ड मैन से भागते हुए आए और ये कभी भी आसान नहीं होता थर्ड मैन पर ऐसे हाई कैचेस को जा लेना। और तैयब ताहिर जिनका सर हिल गया था, बहुत ज्यादा शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे, इस बार लेग साइड में पुल करते हुए आउट हुए। कमाल कैच है ये सलमान खान का। जल्दी जज किया था, डिप कर रहा था, लेकिन अच्छी स्प्रिंट की। सलमान इरशाद को आखिरकार कामयाबी हासिल हुई और वो भी बड़ी विकेट की सूरत में। तैयब ताहिर बहुत खतरनाक खिलाड़ी है अगर विकेट पे स्टे करे। 23 पर आके वापस सेंट्रल पंजाब 51 पे 3।
सेंट्रल पंजाब की बैटिंग के एक हैवीवेट गए और दूसरे आ गए। शुएब मलिक ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, सबसे ज्यादा निस सेंचुरियां हैं इनकी पाकिस्तान में T20 क्रिकेट में, और सबसे ज्यादा रन्स इस टूर्नामेंट में तैयब ताहिर के थे, इसलिए ये बड़ी विकेट है जो नॉर्दर्न को मिल गई। या थोड़ा सा ज्यादा ललचा गए तैयब ताहिर, हमने देखा कि सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर हैं तो क्यों ना उठा मारा जाए इससे मिड ऑन के ऊपर से। लेकिन इस तरह के जो स्लिंगिंग एक्शन के हामिल बॉलर होते हैं उनके खिलाफ हवा में शॉट खेलना इतना आसान होता नहीं। बिल्कुल डॉट बॉल्स का भी उन पे प्रेशर आ गया था, चौका हासिल किया लेकिन 3 डॉट बॉल्स हो गई थी, इसलिए क्रॉस द लाइन जाना चाह रहे थे, लेग साइड पे खेलने की कोशिश की। और जो एंगल है जिस आप एक्शन की बात कर रहे हैं सलमान निशान का, वो हल्का सा राइट हैंड से दूर ही जाता है, इसलिए आसान नहीं होता। अगर लाइन कवर करते फिर बेहतर शॉट लग सकती थी, लेकिन अच्छा कैच जमान का, बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल फील्डिंग बहुत मैटर करेगी इस रन चेज में। दोनों एंड्स पर एक ही तरह के बॉलर्स से आप पाला पड़ेगा, मलिक और कासिम का। दोनों का राउंड आर्म एक्शन है। जमान खान जिनने अभी अभी बड़ा शानदार कैच लिया, जिससे जो बाकी टीम के खिलाड़ी हैं जाहिर है उनकी जो स्पिरिट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी इस अहम तरीन मैच में। और खुद इनकी भी इनको ज़रूरत थी पहले ओवर में 17 रन देने के बाद ऐसी हरारत मिले उनकी रगों को भी। लेकिन फिर से करना होगी। जब आप थर्ड मैन पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे होते हैं तो सबसे मुश्किल ये होता है कि गेंद की रफ्तार का आपको अंदाज़ा नहीं होता। आप फ्लाइट का अंदाज़ा कर भी लें, लेकिन नज़रें बिल्कुल नहीं हटाई और भागते हुए गेंद के नीचे आए और आखिर में बिल्कुल क्लैप्स नहीं हुए। आउटसाइड एज, 4 रन मिले। ये गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ मूव हुई। शुएब मलिक ज्यादा एतमाद से नहीं खेल सके, लेकिन वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे। रन आने चाहिए, यही मैटर करता है। स्क्वायर अप हो गए थे थोड़ा सा, अच्छी डिलीवरी थी, अच्छी लेंथ पे हल्की सी मूवमेंट हुई, सीधा बल्ले से रोकना चाह रहे थे लेकिन ज्यादा फ्रंट फुट पे आए नहीं। एफर्ट अच्छी थी लेकिन फिर भी आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा जमान खान के लिए। अच्छी डिलीवरी पे 4 रन दे बैठे। अच्छी कोशिश थी महरान मुमताज की। ऑफ साइड में राहबंदी की गई है। जीशान मलिक हैं फील्डर डीप पॉइंट पोजीशन पर। इस पार्टनरशिप पर बड़ा दारोमदार है इस ड्रेसिंग रूम का और पूरी टीम का इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अगर शुएब मलिक और कासिम अकरम में से कोई भी अच्छी कारकर्दगी आज नहीं दिखा सका तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा इस हदफ तक पहुंचना, क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक रीस सी बनी रही है। ज्यादा टीमें पहले बैटिंग करके जीती। राइट डिक्लेयर होगा ये। इनमें से किसी एक का डीप जाना बहुत जरूरी है। आगे आने वाले खिलाड़ियों में जो ज्यादा एतमाद जिन पे होगा सेंट्रल पंजाब को, वो इमरान खान न्याजी हैं, उसके बाद आमिर यामीन भी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक का विकेट पे रहना बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं हेड स्टार्ट जो है वो इनको मिल गया है पावर प्ले में, और अभी भी इनको बाउंड्रीज मिल रही हैं। गेंद जरा सी शॉर्ट थी और कासिम अकरम इसे सबक सिखाने के लिए हम वक्त तैयार थे। बड़ा शानदार स्कोर कर
हुरैरा ने एफर्ट जरूर की, लेकिन इतनी अच्छी टाइमिंग थी कि बीट कर गए। यहाँ पे अगर आप इन्हें खिलाएंगे तो ये आंखें बंद करके भी कट शॉट मारते हैं, इतना इनको कंट्रोल हासिल है इस शॉट पे। एजाज अहमद मौजूद हैं, नॉर्दर्न के जो हेड कोच हैं। इस कट शॉट पे तो उनको भी नाज होगा। पाकिस्तान में हमने बहुत कम बैट्समैन ऐसे देखे हैं जो एजाज अहमद की तरह कट शॉट फास्ट बॉलर को खेलते रहे हूँ। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही आला था। तकरीबन हर बार हर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एजाज सेंचुरी बनाते थे। कट और पुल शॉट वो कासिम अकरम की तरह खेलने के आदी थे। कासिम अकरम की बहुत ज्यादा मूवमेंट पिछले पाँव पे नहीं जाती, वो बैक एंड क्रॉस नहीं जाते कट शॉट के लिए, इसलिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। जो थोड़ी सी हार्ड लेंथ है उसको भी बना लेते हैं अपना पिछला पाँव को लैप्स करके। ये और एजाज अहमद को इसलिए भी नाज होगा कासिम अकरम के इन कट शॉट्स पर कि वो इनके कोच रहे हैं अंडर 19 क्रिकेट में। ये पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान थे हाल ही में वर्ल्ड कप में। ये डेफिनेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है मुत्तहिदा अरब इमारात में 1 अक्टूबर से, इसमें जनूबी अफ्रीका है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हिस्सा लेंगी। एक और अच्छा ओवर सेंट्रल पंजाब के लिए जो डबल फिगर में रहा 12 रन के साथ 63 पर 3। ये एक अच्छा डिलीवरी थी सुहेल तनवीर की जानिब से, इखलाक को डिसमिस किया। रन्स रुके नहीं जब तैयब ताहिर मौजूद होते हैं, रन आपको नजर आते हैं सेंट्रल पंजाब के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये थोड़ी सी लालच करके फैजान फिफ्टे बल्ले से खेलने चले गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह कासिम अकरम ने खेलना शुरू किया, ये एक अच्छा कैच था जमान का। एक बड़ी विकेट हासिल की थी तैयब ताहिर की सलमान इरशाद ने। अभी भी मोमेंटम जो है सेंट्रल पंजाब की जानिब है। कासिम अकरम और शुएब मलिक मौजूद हैं मिडल में, तकरीबन 9 के रन रेट से ये रन बटोर रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इन्हें, लेकिन ये पार्टनरशिप तोड़ना नॉर्दर्न के लिए ज़रूरी है, वरना ये वन साइडेड अफेयर हो सकता है। नॉर्दर्न के बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा रन दे दिए हैं 9 के औसत से, लेकिन उनने 3 विकेटें भी ली हैं। और यही आज खेल का नाम है कि अगर ये विकेटें लेंगे तो ही यहाँ से आगे निकलने में कामयाब होंगे। और दूसरी जानिब डू एंड डाई की हालत में है सेंट्रल पंजाब की टीम। उनके लिए करो या कूच करो की सूरत हाल है, इसलिए वो ज़्यादा दबाव में। ये नॉर्दर्न को एक मौका और भी है 10 पॉइंट्स तक पहुंचने का। कल उनका मुकाबला सदर्न पंजाब से होना है। और सेंट्रल पंजाब की जो नेट रन रेट है वो कदरे कम है दीगर टीमों से, लेकिन अगर आज ये नॉर्दर्न को हरा दें और कल उम्मीद करें कि सदर्न वो भी नॉर्दर्न को ज़ेर कर ले तो फिर इनका इम्कान रहेगा। एक तासुर ये जरूर था कि 18 ओवर तक अगर ये चेस कर लेते हैं तो उनका नेट रन रेट बेहतर हो जाएगा। और नेट रन रेट इसी तरह के स्ट्रोक से बेहतर होगा। शुएब मलिक ने लेट कट किया, 2 फील्डर वहां खड़े किए गए हैं, लेकिन मलिक को रोकना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर जब ये स्पिनर पर शॉट खेल रहे हों। ज़्यादा बुरी डिलीवरी नहीं थी, मलिक ने बना के ये शॉट खेला, इंतजार किया, पिछली लेग को थोड़ा सा बेंड किया जिसकी वजह से कट शॉट महारत के साथ खेलने में कामयाब हुए, लेकिन बहुत लेट खेला। फील्डिंग कह सकते हैं थोड़ी बेहतर होनी चाहिए इस तरह की जब आप टारगेट डिफेंड कर रहे हो। लेग साइड में टर्न किया, एक और चौका। पहले विकेट कीपर के दाएं जानिब बाएं जानिब से
बहुत ज्यादा फाइन ग्लांस किया शोएब मलिक ने। मलिक और कासिम दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं और बॉलर्स को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दे रहे। रही सही कसर, ये फील्डिंग में लैप्सेस नॉर्दर्न के लिए मसला बनता जा रहा है। अब विकेट बैटिंग करने के लिए अच्छी है और खासतौर पर जब ये दिन ढलने लगता है तो फ्लड लाइट्स की रोशन होते ही बैटिंग ज्यादा बेहतर होने लगती। एक और महंगा ओवर 9 रन देते गए मेहरान 72 पर 3। Mubassir. Been a good passage of play for Central Punjab. This partnership has really gathered pace in the last 4 to 5 overs. 51 for 3 at one stage, and then Malik has come on and joined Qasim Akram. He probably wouldn't have ball, but he's trying to now fill in for Zaman Khan. Has been very expensive. Also, the other reason is to slow things down. Fast bowlers are being put away because the Central Punjab batters are throwing their hands at everything, especially Qasim Akram. Can they get the second one? Oh yes, that's good running. Under pressure at the moment, the Northern team. And things can ease out if they can get Qasim Akram now. Excellent placement, soft hands, just enough distance on it to get it away from Ruhail Nazir. Sweepers had to come a long way. This is superb cricket. Qasim Akram got a good head on his shoulders. Such a young man. Again, 2 is a call, and they should get it. It's such a huge gap there on the offside. Still 3 men in the circle. It's exactly what Northern didn't do in this phase of their innings. Over number 7 to 15. You see this huge gaps. This is a huge field, 72 yards all around. Can hit the ball in the pockets. Mid-wicket extra cover, you can get 2 pretty much all the time. This is a great run chase from Central Punjab. Without taking any risks, 7 of the over already, with 1 to go. Nine overs gone. It's 80 for 3. There's the troubles that Northern had that Sikandar was talking about. 2 overs, 29 runs. Zaman Khan went for, Mehran Mumtaz also went for 23. Sahil Tanveer and Salman Shah, they did quite well really. And Mubassir into the attack. They need some control. Wickets will help. Yeah.
52 runs between Mehran and Zaman in the 4 overs. That's a lot of runs. Mehran will have a chance to redeem himself. He bowled in the power play. He's guilty of bowling a bit short, and Qasim Akram really jumped all over him. They've got themselves in the position where they now can afford to take singles and twos. It's not just about winning. We've been also talking about getting their net run rate in the right place. Central Punjab probably try and win this in around 18 overs or so. Then they can come to number 3 on the points table. And at the moment with 10 points they can still struggle. Yes. Chal. Good stop. Excellent stop by Mubassir. Northern got their angles right or what? Every time that ball goes, it seems they're hitting the gap. Excellent effort there, but couldn't prevent the single. The 2-fielder square on the offside. Only a left arm spinner. A good part is the running between the wickets, the understanding, no hesitation, trusting each other's call. 4 singles. Mehran is trying to now bowl within the stumps, and he's realized that what he did wrong in the second over rather. First was good. The field has also opened up, so he gets a bit of confidence because he bowled in the power play. Those 2 square fielders, the short third and point, they're behind square. Sohail Nazir now trying to get the angles right, because Mehran has gone for runs of good deliveries as well. Wow, that was closed. That was very, very close. Mehran Mumtaz could not believe Asif Yaqub judged in favor of the batter. No signal yet. Get the glove. Asif Yaqub is normally very, very good. He didn't give it a run, didn't give it leg by, so it came off something, probably glove at the halfway stage. Central Punjab 86 for 3. And that's exactly what you don't want. After a big leg before shout, you start your over with a bad delivery. You just release all the pressure that the other bowler has built up. It's a good stroke. He got down quickly on one knee, and look at that bad speed. There was a sweeper. Placed it away from him. Mubassir knew the line wasn't right. Qasim Akram is looking in supreme touch. See, that's the run I'm talking about. The call, the trust. It was going straight to Salman. Short third. But he still get that single. This is where the glove, it was the glove. But look at what's happening. There's an opportunity of a run out here. And the fielder hasn't thrown the ball. He hasn't even collected it. He's busy appealing. That was the thing with the last over as well. Good deliveries have been scored off. This is what Central Punjab are doing right. And like I mentioned, that short third fielder was caught napping. Salman Irshad on both occasions. Oh yes, moving.
got to find a way to break the partnership and come back into the game, Northern, because this is becoming a little too easy for Central Punjab to just push the ball around, get the odd boundary in. Completely risk-free, and that required rate of 7.64. They're meeting it easily. Northern cannot afford that. It's 8 of the over already. 1 delivery to go, so Central Punjab is ahead of the rate. Over ends with a single, 95 for 3. The evening is setting in here in Multan. Crowd is building. This game is clearly heading Central Punjab's way. It's been a dominant performance set up by their bowling and fielding. And their middle order is really doing the business for them. This partnership, 44 of just 31 deliveries. Clearly ahead at the similar stages of the innings. He done well because now the required is 7.5, whereas the current is 8.6. So they're ahead of the game in every aspect. Mehran will bowl his final over. The ball. His second over was expensive, was hit for 3 boundaries. So he's pulled things back. He saw him coming. Imran has bowled reasonably well in Multan. The reason is that he's really cleverly changed his pace. Subtle variations. He's been able to get some turn when available. You saw the last ball, the way he slows it up. Throws the challenge to the batter to come at him. Oh yes, oh yes. Excellent, Mary. How good he is with the bat yesterday and today. Got to be a bit bold. In this format, you've got to go out and take the fight to the opposition. You cannot sit and wait for freebies, really. Very well bowled, Mary. And good to see our youngster batting with such confidence and also having that responsibility of leading a side. Bas, bas, bas. Oh, very well bowled, very well bowled. बहुत अच्छे, Just the Mary. one. One short of 100, Central Punjab. They've got the game in control with 2 set batters at the moment. I have to wait for the next over to get to that 100. 99 for 3 after 12.
अंदर ही कासिम अकरम और शुएब मलिक ने ये अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हुआ है और शुएब मलिक पर ज़्यादा दबाव आने नहीं दिया कासिम अकरम ने और यहाँ पर 100 रन सेंट्रल पंजाब ने, इसलिए 3 विकेटें जल्दी गिरने के बावजूद बहुत जल्दी बना लिए। और देखिए जो रन औसत दरकार है वो मौजूदा रन रेट से वो कम है, इससे भी जाहिर होता है कि पलड़ा बैटिंग टीम का ही भारी है। अली मेरे साथ हैं, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे हमको कॉम बॉक्स में। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। यहाँ ये अच्छा टाइम है और एक अच्छी पार्टनरशिप, दोनों बहुत सिमिलर बैटर हैं, सिमिलर क्रिकेटर हैं, रादर ऑफ स्पिनर बैटर हैं दोनों। ये अच्छा टाइम है सेंट्रल पंजाब के लिए। और ये कट शॉट खेलना दोनों की खासियत है। कासिम अकरम ने एक बार फिर स्क्वायर के पीछे 4 रन पा लिए। यहाँ कासिम अकरम एक बहुत ही शानदार उभरते हुए स्टार हैं। जिस तरह की बैटिंग अब ये कर रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट। और हमने देखा है जब जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जा रहा है, इनकी फॉर्म वापस आती जा रही है और अब तो अपनी मर्जी से शॉट खेल रहे हैं और कट शॉट तो इनका फेवरेट है। और जब थर्ड मैन के इलाके में इस तरह आजादाना रन्स बैट्समैन बनाना शुरू करते हैं तो फील्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है, जो फील्डिंग करने वाला कप्तान है उसके लिए। और सबसे खुशाइन बात जो कासिम की है कि दूसरे एंड पे शोएब मलिक खेल रहे हैं, जो प्रेशर नहीं आने देते हैं। जो हम अक्सर देखते हैं कि अगर एक प्लेयर फ्री फ्लुएंट खेल रहा है तो दूसरी तरफ से अक्सर बैटर फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। शोएब मलिक सिंगल 2 और जो स्ट्राइक है वो वापस उनको देते जा रहे हैं, ये पॉजिटिव साइड है। 57-44 बॉलों पे हिट जोरदार और 6 भी। शुएब मलिक को आप जब जब खराब गेंद करेंगे तो मुंह की खाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल खाई इस बार, क्योंकि अगर आप इस लेंथ पे उनके लेग साइड पे यहाँ बॉल करेंगे तो शोएब मलिक नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि लंबी बाउंड्री भी हो, जितनी भी लंबी बाउंड्री हो, बहुत आसानी से बाउंड्री पार करवा देते हैं। और इसी की मैं बात कर रहा था कि प्रेशर नहीं आने देते हैं दूसरे बैटर पे, रन्स बटोरते रहते हैं। उठाकर खेला, गेंद फील्डर से दूर गिरेगी। यहाँ 2 रन शुएब मलिक ने और बना है। जितना जोरदार शॉट था, मुझे लगा शायद ये भी 6 रन के लिए चला जाएगा, लेकिन टाइमिंग उतनी मौजूद नहीं थी, प्लेसमेंट अच्छी रही, 2 रन हासिल किए। एक महंगा ओवर साबित हुआ ये मुबस्सिर का। 114 पर 3 सेंट्रल पंजाब। देखिए शाम की सुर्खी अब पूरी तरह फैल चुकी है और सूरज बिल्कुल डूब जाने को है। आज जो टीम हारेगी ये उसके लिए भी रोशनी कम हो जाएगी इस टूर्नामेंट में। सेंट्रल के लिए तो खत्म हो जाएगी। विकेट्स पे नजर डालते हैं। सोहेल तनवीर ने बहुत शानदार तरीके से आगाज किया था, ये फुटवर्क बहुत खराब, खड़े खड़े खेल गए। उसके बाद फैजान का ये शानदार कैच है, क्योंकि बहुत जोरदार हिट लगी थी। मेहरान मुमताज का उतना ही शानदार कैच, एक बड़ी विकेट। तैयब ताहिर थोड़े प्रेडिक्टेबल हो गए थे, एक ही तरफ हिट मार रहे थे, और एक और शानदार कैच इस बार जमान खान की जानिब से। सोहेल तनवीर और सलमान इरशाद के 2-2 ओवर्स हैं। जमान खान ज्यादातर आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, आज महंगे रहे। मेहरान मुमताज ने 1 विकेट हासिल की अपनी पहली गेंद पर। इन दोनों की एक खूबी ये है कि ये स्ट्राइक से हटने की सलाहियत रखते हैं दोनों ही, और दूसरा जो स्पिनर है ये उसका चैन चुरा लेते हैं।
या इसीलिए शायद अब उमर अमीन ने फैसला किया कि अपने सबसे एक्सपीरियंस बॉलर को लाया जाए, सोहेल तनवीर को, क्योंकि विकेट की जरूरत है। पार्टनरशिप 64 रन पर पहुंच गई है और अगर ये पार्टनरशिप थोड़े ओवर और खेल जाती है तो मैच को बहुत दूर ले जाएंगे। इसीलिए शायद ये वक्त है, इसी वक्त इस पार्टनरशिप को तोड़ना होगा। यहाँ दूसरा रन के लिए वापस लौट जाना चाहिए। शोएब मलिक ने पहला रन दौड़ते ही ये तासुर दे दिया था कासिम अकरम को कि उनको वापस आना होगा। और अली, लाहौर में ये बहुत अरसे के बाद कोई खिलाड़ी आए हैं, कासिम अकरम को, ऐसे बैट्समैन जो स्पिन को बहुत अच्छा निगोशिएट करने में कामयाब हो रहे हैं। और ऐसा लगता है तारिक भाई ये आए हैं और ये रुकने के लिए आए हैं, इज हियर टू स्टे जैसे कहते हैं, क्योंकि बहुत शानदार क्रिकेटर हैं। सोहेल तनवीर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि 100% फिट भी नहीं थे, और जितनी गर्मी और जितनी ह्यूमिडिटी मुल्तान के स्टेडियम में हमें मिली है तो आसान नहीं होता है इस उम्र में। या मुसलसल ये नवा मैच खेल रहे हैं और खास तौर पर अगर आप शिमाल से आए हैं जुनूब की तरफ तो मौसम ज़्यादा आपको सख्त लगता है। यहाँ आज जब सेंट्रल पंजाब के नौजवान फास्ट बॉलर भी बॉलिंग कर रहे थे, अहमद दानियाल और उनके साथ हुनैन शाह, उनको भी मुश्किल पेश आ रही थी इस मौसम से निपटने के लिए। या जब आप बैक टू बैक मैचेस खेलते हैं तो नेचुरली आप जितने भी फिट हों तो थोड़ी एनर्जी तो कम हो जाती है आपकी। और नॉर्दर्न कल भी मैच खेले, आज भी खेले, कल भी खेलना है, और अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो भी खेलना है, और फाइनल खेलते हैं तो 5 लगातार दिन मैचेस खेलेंगे। तो अब जितने भी सुपर फिट हों तो थोड़े मसाइल तो होते हैं आपको। ये आहिस्ता गेंद थी, चकमा देने की कोशिश की कासिम अकरम को, लेकिन आज उन्हें गेंद अच्छी नज़र आ रही है। पहले हम सुनते थे कि जो सूरज है इससे आपको हरारत मिलती है, एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ मुल्तान में ये कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है। सोहेल तनवीर को देखकर लग रहा है जब मसला गर्मी से इतना नहीं होता जितना ह्यूमिडिटी से होता है, और यहाँ भी ह्यूमिडिटी लेवल बहुत है। आज जैसे हमने देखा 52% था, वो बहुत ज़्यादा होता है, और यही मसाइल क्रिकेटर्स को पैदा हो रहे हैं। पसीना बहुत आता है और कैचेस भी छूटे हैं काफ़ी, उसकी भी वजह काफ़ी यही है। लेकिन दाद देनी होगी इन क्रिकेटर्स को कि यहाँ पे अपना सुपर शो पेश कर रहे हैं। यहाँ तजर्बे का मुकाबला तजर्बे से है। शोएब मलिक, सोहेल तनवीर दोनों ही बहुत तजर्बेकार T20 प्लेयर हैं, पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं, ग्लोबल T20 स्टार्स हैं दोनों बहुत कामयाब T20 के क्रिकेटर हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, 350 से ज़्यादा मैचेस हैं, तो आप अच्छे होते हैं, आप क्वालिटी क्रिकेटर होते हैं, तभी आप इतनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। और इन दोनों ने ये प्रूव किया है कि ये क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं। और यहाँ पे आप, इनका रोल डिफरेंट है, यहाँ पे आप मेंटरशिप कर रहे हैं यंग लड़कों की, और उसमें भी शानदार रहे हैं दोनों। तो थम्स अप इन दोनों क्रिकेटर्स को। ये बल्ले के ज्यादा ऊपर लगी है, भागे हुए आए फील्डर, लेकिन मैदान खासा खासा ज्यादा है। मोहम्मद हुरैरा थे, कासिम अकरम जो हैं शायद वो गर्मी और यहाँ मुल्तान के सूरज का असर इन पर भी हो गया, क्रैम्प्स आए। जी हाँ, मुश्किलात तो हैं, क्योंकि कल रात को अपना मैच खेले थे, आज आफ्टरनून में मैच खेले हैं। दोनों टफ मैचेस थे और दोनों में कासिम की परफॉर्मेंस शानदार रही है। 20 ओवर फील्डिंग में भी रहे, बैटिंग में भी काफ़ी ओवर्स बैटिंग की उन्होंने। यहाँ पे हैमस्ट्रिंग का मुझे मसला लग रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैं, यंग हैं, ज़्यादा मसाइल होने नहीं चाहिए। यहाँ लगता है कि इनका टकना मुड़ गया है जब ये फुल शॉट खेलने के लिए पोजीशन ले रहे थे, तो इन जो सारा इनका जो वजन था, क्या उनके एंकल पर आ गया या हैमस्ट्रिंग का मसला? यहाँ थोड़ा बैलेंस आउट हो गया था। देखिए ये हैमस्ट्रिंग का मसला मुझे लग रहा है, क्योंकि नेचुरली जब इतनी गर्मी हो, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, तो आप ड्रेन बहुत करते हैं, पसीना बहुत निकलता है, जिसकी वजह से वीकनेस बहुत हो जाती है, और आपका जो फर्क है वो काफ़ी हैमस्ट्रिंग पे आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग है, यंग है,
थोड़ा पानी पियेंगे, डिहाइड्रेट होंगे तो बेहतर हो जाएंगे। यहाँ खुशाइन बात है ये सेंट्रल के लिए कि अपने कदमों पे वापस आ गए हैं। ये अहम इनिंग है, ये अहम पार्टनरशिप है। 42 रन अभी करने हैं, थोड़ा जल्दी टाइम में करने हैं क्योंकि नेट रन रेट को भी जहन में रखना है। 14 ओवर्स के बाद 121 पर 3 सेंट्रल पंजाब। जुमे को अक्सर जो कारोबारी मराकज़ होते हैं मुल्तान में बंद होते हैं। यहाँ जो काम करने वालों की छुट्टी हो जाती है और लोग खेल में और दूसरी जो तफरीह के मौके होते हैं वो ज़ाया करते नहीं। कासिम बाग के इलाके में जाते हैं रात को थिएटर देखने के लिए, उसका भी बहुत शौक़ है। मुल्तान में जो है अली, आपको भी हुआ इत्तेफाक, यहाँ आते जाते रहते हैं आप भी? जी मुल्तान में तो कम आता हूँ क्योंकि मेरा इलाका यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बिहाड़ी का है, जहाँ पे ज़्यादा ज़िंदगी का वक्त गुजारा है मैंने। मुल्तान में कम हुआ है, लेकिन लाहौर में जी हाँ थिएटर का बिल्कुल क्यों नहीं। क्रिकेटर्स को तो काफ़ी शौक होता है, हमने देखे काफ़ी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। एंटरटेनमेंट जहाँ भी हो, जैसी भी हो, लाहौर वालों को तो वैसे ही बहुत पसंद होती है। सलमान इरशाद इस वक्त सेंट्रल पंजाब की टीम जो है बड़ी तेज़ी के साथ पेशकदमी कर रही है। सिर्फ 49 गेंदों में 70 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। 51 पर तीसरी विकेट गिरी थी और तैयब ताहिर आउट हुए, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं। इन दोनों खिलाड़ियों ने चांसलर्स इनिंग्स है कासिम अकरम की, और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट पर खेले। इनका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 140 का है। इधर आहिस्ता गेंद थी इनटू द पिच की। 140 का करियर स्ट्राइक रेट है कासिम अकरम का, और जो ज़्यादातर इन्होंने रन्स बनाए हैं अपने T20 करियर में वो ज़ाहिर है कि नॉन पावर प्ले मरहले में बनाए हैं, इसलिए इनकी औसत उतनी नहीं है। और यही वजह है कि औसत कम है। स्ट्राइक रेट पर ये समझौता करते नहीं हैं, और ये अच्छा है। या T20 क्रिकेट में बिल्कुल आप अफोर्ड कर सकते हैं कि एवरेज बेशक हाई ना भी हो, लेकिन स्ट्राइक रेट आपकी अहम है। और अगर आप चौथे पांचवें नंबर पे खेलते हैं तो आपको एक फिनिशर का रोल निभाना होता है, और यही यहाँ पे कासिम अकरम निभा रहे हैं। जैसे जब आप मिडल ऑर्डर बैट्समैनों की बात करते हैं, इन दिनों पाकिस्तान टीम में भी खा मोहम्मद आसिफ हूँ या खुशदिल शाह या जो दीगर जो मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, आपको उनके औसत से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट ही देखना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये मरहला, ख़ास तौर पर ये जो पोजीशंस हैं नंबर 4 के बाद की, इन पर खेलना। क्योंकि अगर जो है नंबर 5 या नंबर 6 के बैट्समैन को आखिरी 5 ओवर्स में बैटिंग का मौका मिले तो वो जो पूरे 5 ओवर्स हैं वो 30 गेंदें तो नहीं खेलता, वो उससे कम ही वो गेंदें खेलेगा, और फिर फ़ौरन जाकर आपने बाउंड्रीज हासिल करना है, बॉलर्स के पीछे पड़ना है, उसमें विकेट गिरने का खतरा रहता है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही शानदार असेसमेंट है ये आपकी। और पाकिस्तान लकी है कि ऊपर वाले 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो इतने सॉलिड हैं, इतने फॉर्मिडेबल हैं कि बिल्कुल ही कम मौका मिलता है जो लेट मिडल ऑर्डर बैटर्स को। लेकिन हम होप करेंगे कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस पहले के देते आए हैं आगे वर्ल्ड कप में भी दें। अच्छा शॉट खेला शुएब मलिक ने, उन्हें खुला मैदान मिल गया। एक और चौका, 40 के पेटे में पहुंच गए, और शुएब मलिक के परस्तारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ ये एक्सपीरियंस है, ये क्वालिटी क्रिकेट है। रियलाइज कर रहे थे कि लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा रूम दिया, जानते थे कि थर्ड का फील्डर थोड़ा फाइन है, और प्लेसमेंट बहुत कमाल की रही दोनों फील्डर्स के दरमियान से। ये शॉट ये सिर्फ तजर्बे के साथ ही आप खेल सकते हैं, लेंथ को जल्दी परख लेते हैं। शुएब मलिक
को जब हम इस मुल्तान के स्टेडियम में देखते हैं तो वो यादों का एल्बम जो है वो भी खुल जाता है। यहाँ इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था, वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तारीख का भी पहला टेस्ट मैच था। बांग्लादेश के खिलाफ एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप का मुकाबला हुआ था और उसमें इन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। उस वक्त ये बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर थे। वकार यूनुस कप्तान थे पाकिस्तान की उस टीम के। 5 सेंचुरियां बनी थी पाकिस्तान की जानिब से उस इकलौती इनिंग्स में। और उम्दा कवर ड्राइव, फील्डर को रोकने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन अच्छी एंटिसिपेशन थी। यहाँ प्लेसमेंट कमाल की रही एक बार फिर। पहले स्क्वायर खेले, अब फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेले। ये कमाल की बैटिंग है शोएब मलिक की जानिब से। 15 ओवर का इख्तिताम हुआ, 130 पर 3 सेंट्रल पंजाब। यहाँ ये पाकिस्तान के अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनुस के नाम से मंसूब ये मीडिया सेंटर है और इसी की पहली मंजिल पर हमारे कमेंट्री बॉक्सेस हैं और ये आपको हमारे साथी कमेंटेटर्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। और ये फॉरेन का एम्प्लॉयर है, ये इंज़िमामुल हक के नाम से मंसूब है। उनने बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को एक यादगार फतह दिलाई थी। उस टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर जब वो टीम से बाहर होने वाले थे, वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। दरअसल इंज़िमामुल हक उस इनिंग से पहले रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक टीम ऑफिशियल्स ने मना किया था कि दूसरी इनिंग्स में आप अपनी बैटिंग का इंतज़ार कर लीजिए, इतनी जल्दी ना कीजिए। यहाँ दरअसल इंजमाम जो थे उन दिनों अपनी फॉर्म से परेशान थे। तो उनका कमबैक हुआ था 2003 के वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप हुए, फिर टीम में कमबैक हुआ तो वो कराची और पेशावर के टेस्ट मैचों में ज़्यादा रन्स नहीं बना सके थे। और यहाँ पर भी उस बड़ी बॉलिंग पिच थी, बॉलर्स के लिए बड़ी साजगार थी। लो स्कोरिंग मुकाबला था। पहली इनिंग्स में आउट होने के बाद दिल बर्दाश्ता हो गया, लेकिन फिर इंज़माम ने उस टेस्ट मैच में आखिरी इनिंग्स में किया टेल हंटर्स के साथ मिलकर, और तारीख का हिस्सा। और ये शॉट शोएब मलिक की तारीख का हिस्सा रहा है। बहुत उम्दा कट बैकफुट से। यहाँ एक बार फिर लेंथ को बहुत जल्दी पर रखते हुए, ये ट्रेडमार्क शॉट है, ये ब्रेड एंड बटर है शोएब मलिक के लिए। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे और आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इस पेस पे कोई मसला होना नहीं चाहिए उनको। प्लेसमेंट भी कमाल की रही, बहुत ही कमाल की इनिंग खेल रहे हैं यहाँ पे शोएब मलिक। एक ऐसे टाइम पे जहाँ सेंट्रल पंजाब को क्वालिफाई करना है और एक अहम पार्टनरशिप जो 84 रन पर पहुंच गई है, ये मैच विनिंग पार्टनरशिप हो सकती है। सत्ताईस बॉलों पे 27 रन दरकार हैं अब सेंट्रल पंजाब को। और जैसे ये दोनों जा रहे हैं, मुझे लगता है जैसे शायद 2 ओवर पहले ही ये मैच खत्म हो जाए अगर ये दोनों रहते हैं। काफ़ी मलाल होगा आज नॉर्दर्न के इनके ड्रेसिंग रूम को, क्योंकि इनकी विकेटें नहीं गिरी हुई थी। एक मौके पर 121 पर एक ही खिलाड़ी आउट थे, लेकिन पाँव जो है वो इतना दबाया नहीं उमर अमीन ने, और उनके साथ नासिर नवाज से और रन्स बनाए जा सकते थे, क्योंकि अगर ये 200 रन्स को हदफ बनाकर ये चलते तो शायद ये 180 पर पहुंच जाते। लेकिन इनका हदफ ये 170 175 से ज़्यादा नहीं लगता था विकेटें हाथ में होने के बावजूद। यहाँ थोड़ा फंस गए मिडिल ऑर्डर में, इस बारे में बात करेंगे। किंगडम वैली एक रॉयल लाइफस्टाइल है, आप जा सकते हैं उनके फेसबुक पेज पे और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, और आई एम श्योर आप अगले विनर जरूर होंगे। एक्स्ट्रा कवर की जाने बड़ा हिट मारना चाहते थे, रूम जरूर दिया, लेकिन स्मार्ट बॉलिंग, थोड़ा पेस कम थी। तो हम बात कर रहे थे नॉर्दर्न की इनिंग की, तो जो मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से बैटिंग हुई, ऑल्दो नासिर नवाज मौजूद थे, लेकिन जो एक्सेलरेशन आपको मिडिल ऑर्डर और को मोमेंटम एंड को देना था, वो ओवर्स बहुत शानदार बॉलिंग की सेंट्रल ने। अहमद दानियाल आई थिंक बहुत ही इंप्रेसिव है, और विकेट्स हासिल नहीं की, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो बहुत कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं।
बस सरप्राइज किया, अंपायर की तरफ देखा, शायद वाइड दी जाए लेकिन ऐसा नहीं था। 138 पर 3। Almost a walk in the park for Central Punjab. But they would not be looking at this equation. 25 of 24. They would want to get there as soon as they can. They'll be finishing off the league stage with 10 points. Since already got there with 10 points. Be an interesting reading of the table. Smashed down the ground. Just the one bounce. Malik brings up his 15 style. 73rd 50 of his career. Well played. He's turning things on now. Exploiting the field, exploiting the length. He's pushing the bowler to bowl in his areas where he would like to go for the boundaries. It wasn't a bad delivery, but he's so deep in crease. He got underneath it. Never tried to overhit it. They both have batted really well. Calculated risk taken. It's just the race against time. He's sitting back on that back foot. He expected that. Really wonderful partnership this. 92 of just 63. And Northern are looking very, very flat. Qasim Akram on 49 now, on the verge of back-to-back 50s. Batted beautifully yesterday and followed it up with another great knock tonight. Help it on its way, poor delivery, but Qasim Akram will celebrate. Back-to-back 50s for the Central Punjab skipper. He looked totally different from last two games. The way he approached his batting, the way he led the team. Obviously he had huge help from the guy on the other end. With the poor delivery, asking to be hit. He's been all over. Salman Ishad walking back, never made an impact. But these two, Qasim Akram has the luxury and privilege to have Shoaib Malik with him on the field, batting together, huge difference. Very lackluster Northern with the ball and in the field. I'd say that the first half of the innings when Northern was 74 for 1. Since then they really never got out of that mold, never hit the top gear. The Razak will be delighted with the comeback his team has made. Remember, they had 1 out of first 5 and now 4 out of the second 5. Slow delivery. Nothing will go to hand. This is such a day for Northern. Nothing's gone their way. Yeah, I do believe Northern are definitely 20 shy. At least 20 short of the total. Should have accelerated in those middle overs when Nasir and Umar Amin were batting. Central Punjab did really well. Just keep that reins in their hands. It has been this show. Malik and Qasim, the way they approach the batting, it's been brilliant so far. Deep in the crease, Malik was setting himself up for the big blow. Salman Ishad finally nailing that Yorker. First time in the over. The damage has already been done. 11 of the over. 149 for 3.
Looks like skipper Umar Amin has run out of options. Given the ball to Zaman Khan now. It's a delight to watch him bat. The way he comes up with the art, just playing with the field, exploiting the ballers in these big shots. He's never out of them. He uses the crease really well, uses the pace well. There's no area in the ground where he can't hit you. He can read the game really well and take away in just a blink of an eye. He's seen it and done it all once again tonight. In the air, just away from the fielder. Like I said, having such kind of day, nothing is going to hand. And together with Qasim Akram, this partnership is 99 now. Qasim Akram played beautifully last night, and it's never easy to come back and put up back-to-back performances. Today, once again, 34 deliveries only for his 55. What a beautiful stroke. Just sumptuous. Gave himself some room. Cleared the mid off with ease. Scintillating partnership of 100 now among these two. This guy, I tell you what, he's got a long, bright future ahead. But look at that. He's just showed the full face of the bat. And such command. Good transfer of the weight, good high elbow. It's a delight to watch. Even bigger, but it won't go. Clear the fence. I think taken by Mehran Mumtaz. As Pereira, beg your pardon. Qasim Akram looking to finish it off in a hurry. Got underneath the slow delivery. Too much elevation, not enough distance. Probably were looking to finish it off in the 18th over. But just a miscued shot. It was there to be hit. Couldn't really get underneath it. Didn't found the middle of the bat, but he did found Herrera at the receiving end. No problems there. But what a brilliant innings he's played. Exceptional. He deserved all the praise. The way he came out. It's a different approach altogether. Gone on 58. He's done the work. He's led well. Central Punjab 154 for 4. Big hitting Irfan Niazi in the middle. He won't be on strike immediately. Zaman Khan has been having a rough day with the ball. Finally had something to celebrate. Too little, too late. On 42, Northern were definitely looking at him. Give him some breakthroughs. Wasn't the case today. They took the game away from Northern. Again, this one just collapsing. Couldn't find the middle. Otherwise, it would have travelled over the boundary. But he should be proud. Shoaib Malik, if you're getting a pat at your back from this guy, you've done well. Chance at the non-striker end, direct hit. Would have been very, very close. Niazi is a tall boy. Just to gallop up and down the pitch, and he was there. Yeah, another opportunity here. He was just strolling and then all of a sudden realized that he might be in trouble and sprinted away. They needed a direct hit, but as you said, it's just one of those days for Northern. They need to think a lot. They did not have services of Amir Jamal. That was a huge dent. You can see the disappointment on Zaman's face. They have a lot to think about. They did well,
as far as the opening partnership is concerned, the top order, but again the middle order, that's where they lagged back. Lot to think for this guy as well. Things will get tighter for them. It's not a clean connection, but mid-off is up in the ring. Just landed over. The scores are level. Shoaib Malik made sure they get there as soon as they can. Zaman Khan has had a rough day, and he will finish off with conceding this maximum. He's so deep in his crease. He's expecting those Yorkers. Literally clubbed it away. Scores are level. This is some serious performance from Central Punjab, gaining strength by strength. 18 gone, 162 for 4. Kingdom Valley National T20 Cup, another big clash coming your way. Match number 28, Khyber Pakhtunkhwa versus ATF Southern Punjab. Lot to play for Southern Punjab. Well, Nasir Nawaz will see the game through for us because scores are level. And that wide is enough to take Central Punjab home. That little action mimicking Sunil Narayan didn't work for Nasir Nawaz. But Central Punjab deserved winners. And it has been an absolute mauling of Northern with the victory margin, 6 wickets. Central Punjab definitely dominated today's game. They bowled well, they fielded well. And let's talk about these two. Shoaib Malik and Qasim Akram. Crucial partnership above 100. Great win for them in a very crucial time. They cannot afford to lose anything, but they're just gaining momentum. They're one to watch for, winning by 6 wickets. He'll be a happy guy. Abdul Razak's expressions would never change. He's as cool as a cucumber. So is this man, Shoaib Malik. Played an absolute blinder today. When his team needed him, he came to the party, guiding the young skipper in the field as well. Immense contribution from Shoaib Malik. And Central Punjab is now looking like the team to beat here in Multan. There's 4 victories on the bounce. They've solved their puzzle. Everything now being sorted. They're ticking the boxes correctly. And that's why the results are favouring them now. They're becoming one formidable team. Northern, yes, they looked like they might had some troubles. Today it seemed a little bit different in the batting, but again, they fell short. And they were outclassed by some exceptional batting from Qasim Akram and Shoaib Malik. Northern will have another chance tomorrow. But now this moment belongs to Central Punjab. Look at that start. Was indifferent. Faizan and Akhlaq went early. Tayyib Tahir kept the fight going for a while with Qasim Akram. But Qasim Akram and Shoaib Malik, that was the partnership. Pure class and genius from both these, young and old. They came together and saw their team almost home. Qasim Akram lost his wicket just before the final run was scored. And 18 overs, all it took for them. Struggle was all overwritten for Northern bowlers. Only Suhail Salman Zaman and Mehran grabbing 1. But those economy, except for Suhail Tanveer, it was decent. Salman somewhat, and Mehran with 8. Zaman Khan was way expensive. In his 4 overs, he gave away 15 runs and couldn't really capitalize on the opportunities. Just managed to take 4 wickets. Central Punjab were under pressure to get a victory here because they had to win every game. These 2 openers came out. Still a problem area for them at the top of the order. Sohail removing the first batter Faizan, and then
The clock just couldn't last long enough. Tayyip Tahir, his usual peculiar way of attacking the bowling. That was the wicket. Qasim Akram. See some of the class on these strokes. Look at the beautiful wrist work. All of these are not bad balls. Inside the power play, definitely took the advantage of the infield. Couldn't prolong his innings. Tayyip Tahir was taken very neatly by Zaman Khan. See, when you have such a long partnership, you do get some luck. There's more class. And then Shoaib Malik. The least said, the better. Day in and day out, this is what he does for a living. Both were very strong, very assertive in their stroke play. Punished everything that was on a loose side. Malik, he knows how to create opportunities to score runs both sides of the wicket. Way too short from Northern. Always been punished. This was a classic one. Just deep in the crease. Qasim Akram, he had his day. He had his luck on his side. That was a glorious, just lofting over the infield. Trying to finish it early. One too many shots for him. Herrera is on the receiving end. Shoaib Malik, he made sure he finished his job, as that's his statement. And he did. This tells the story of complete domination of Central Punjab. 162 was never enough. Nasir Nawaz is 82. Couldn't really accelerate. But Shoaib Malik and Qasim Akram made sure that they took care of the run chase, and in good time as well. Central Punjab winning by 6 wickets. This will be an interesting reading here. Have a look at that. Central Punjab up to third now. Their run rate is still in negative, but they've made a lot of ground on other teams. Northern dropping few on second last now. They've got one more opportunity to grab that win. That's going to be a tough call. Well, that sees the end of the first game. We'll have a second game lined up for you, but for now, we'll take a short break and we'll be back with live action pretty soon.
Welcome to the post-match presentation of match 27 between Central Punjab and Northern, and what a game we've had. Central Punjab chased this down as if it was nothing, and they also chased it down with 2 overs to spare, which means that they have elevated their position in the points table to number 3 with 10 points against their name. Before I call upon the player of the match and of course the captains, I'd like to welcome Mr. Mohammad Noman Ashraf. He's Sales Executive, Kingdom Valley. Thank you for joining us. Now, I'd like to call upon Umar Amin, the losing captain, first, to have a few words with him, please. उमर ये पिच ज़रा डिफरेंट थी कल की पिच से. एक्सपेक्टेशन थी कि रन्स इसमें ज़्यादा हैं. मिडल ओवर्स आपके थोड़े स्लो चले गए, जो इवेंचुअल टोटल शायद जो माइंड में था नहीं मिला. जी बिल्कुल, आई थिंक वी वर 15 to 20 रन शॉट. अपीयरेंस जो पिच की थी बिल्कुल बहुत ट्रू लग रहा था, लेकिन क्रेडिट दूंगा सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग को. उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. पिच के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वेरिएशन के साथ बॉलिंग की. बॉल उस तरीके से बैट पे आ नहीं पा रहा था जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था. तो आई थिंक ये एक मेन फैक्टर था आज. ऑपोजिशन थोड़ा और प्रेशर में थी. एक तो चेज प्लस उनको रन रेट चाहिए था, क्वालिफिकेशन के लिए डू और डाई था. आपकी बॉलिंग में आपको लगता है कहाँ गलतियाँ हुई हैं? पावर प्ले में, फास्ट बॉलर्स में? बॉलिंग में बिल्कुल मैं एक थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक चीज़ कहता आ रहा हूँ कि हम लोग अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे. हम लोग ज़्यादातर हमने जो बॉलिंग की है वो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की है. जिन जिन मैचेस में हमने स्ट्रगल किया है, जो हम लोग प्लान करके आते हैं उसके मुताबिक बॉलिंग नहीं कर पा रहे. तो आई थिंक ये एक मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से इतने ईजीली रन्स हुए. एक मैच और है आपके पास, उसके बाद जो है 10 पॉइंट्स आपको हासिल हो सकते हैं, एंड देन वी कैन डिपेंड ऑन द नेट रन रेट. तो जी बिल्कुल, अब हमारे पास डू एंड डाई सिचुएशन है. वी हैव टू प्ले आवर बेस्ट क्रिकेट टू विन इट विद अ गुड मार्जिन टू बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. और अगर फाइनल जीतना तो 5 मैच लगातार खेलने पड़ेंगे. जी बिल्कुल, ये एक फैक्टर है, लेकिन अगेन हम लोग प्रोफेशनल्स हैं. हम लोग अपने आप को रेडी करते हैं इस चीज़ के लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी. तो आई होप कि हम लोग क्वालिफाई करें और ये 5 के 5 मैचेस खेलें. चलिए, हार्ड लक टुडे. थैंक यू एंड गुड लक फॉर द गेम कमिंग अप. Now we'd like to talk about the Kingdom Valley player of the match, and again we have 2 winners over here, and they both performed very well and helped Central Punjab win this. One is Shoaib Malik, 62 not out of 39, and the other is Qasim Akram, the captain, 58 of 37. Request both of them to please come forward, and you'll receive the 25,000 rupees cash award and of course the trophy from Mr. Mohammad Noman Ashraf, the sales executive from Kingdom Valley. Brilliant performance, great partnership of 100. And making sure the side gets home with 2 overs to spare. We'll have a quick word with Shoaib first, and then we'll talk to the captain. मैं वैसे तो आपसे कल बात नहीं हो पाई. कल के मैच में भी जो आपकी इन्वॉल्वमेंट थी एज अ प्लेयर और एज अ सीनियर मेंबर इन टुडेज गेम, lots of things were to be looked at. Qualification, run rate, winning of course was the first thing. किस तरह से आपने रेडी करवाया अपने आप को इसके लिए? जब आप आए थे बैटिंग के लिए तो मोमेंटम तो था टीम के पास. बिल्कुल मोमेंटम था, एंड आई गेस व्हेन यू प्लेइंग इन द मिडिल ऑर्डर, उस टाइम पे ना आपकी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छा स्टार्ट मिला हो, सो यू कैरी ऑन विद द सेम मोमेंटम व्हाट हाउ ओपनर्स हैव प्लेड. और मेरी भी कोशिश यही थी. मैं थोड़ी मिस्टेक ये कर रहा था कि आई वाज लुकिंग फॉर रन्स. मैं थोड़ा सा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा था, यूज्ड टू नहीं हो रहा था कंडीशंस पे. तो आज मैं थोड़ा सा सोच के आया था, मैं असेस करूँगा फिर खेलूँगा. तो आई गेस यही एक वो था. और दूसरा, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस मैन ऑफ द मैच. आई थिंक इट्स टू कासिम. ये वो डिज़र्व करता है. और जब वो बैटिंग करने आया था, जो उसकी 3 बाउंड्रीज थी आउट होने के बाद, मैं समझता हूँ वो टर्निंग पॉइंट था. उसने मोमेंटम को बिल्कुल नहीं गिरने दिया. और बीइंग अ यंगस्टर, आई गेस ही डिजर्व्स दिस मैन ऑफ द मैच. में आ गया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात आपसे कर लूँगा. आपसे मिले हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है. अच्छा, एक क्विक सवाल मेरा इसी से रिलेटेड था कि जब आए थे बैटिंग, कासिम यू कैन जॉइन अस, जब आए थे बैटिंग करने के लिए तो आपने स्लो स्टार्ट किया था, देन यू कॉट अप विद हिम क्योंकि आपने काफ़ी बॉल्स कंज्यूम की. दिस ऑफ चेंज ऑफ गियर्स, इट कम्स विद एक्सपीरियंस, विद टाइम, और इज इट एट विल फॉर एनी बैटर? I guess regardless you're chasing 200 runs, you got to assess the conditions as a batsman and then play accordingly. और मुझे ये लगता है कि बहुत सारी ना चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, जो नेशनल टीम का है, उसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं. वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं. दे आर केपेबल इनफ, दे आर गुड इनफ क्रिकेटर्स. सिर्फ उनमें ये चीज़
और ज्यादा क्या मांगेंगे, लेकिन जिस तरह से लीड किया है अपनी टीम को बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने रोल को आपने थोड़ा सा रीडिफाइन किया है, जिम्मेदारी बैटिंग पे ज्यादा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फॉर्म वापस आई है और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि खुद अंदर रहूँ और मैच जिताऊँ। ओवरऑल आपने देखा जब पहले आप चेस करने जा रहे थे तो आई थिंक आप लोगों की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही, स्पेशल आमिर यामीन ने एक ओवर जो करवाया 19th ओवर, आप लोगों ने इनको रोक लिया और एक्सपेक्टेशन शायद इस पिच पे ज़्यादा रन्स की थी। जी बिल्कुल, जिस तरह की पिच थी यहाँ पे हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, हमारे फास्ट बॉलर ने एक्सीलेंट बॉलिंग की है। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपके हो गए 10 पॉइंट्स, रन रेट भी अच्छा हो गया, तीसरी पोजीशन भी आ गई। अब वेट करते हैं और देखते हैं कल नॉर्दर्न क्या करता है। बिल्कुल, वेल प्लेड टुडे द कैप्टन कासिम अकरम, द प्लेयर ऑफ द मैच, एंड दैट कंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन। That's how the teams are sitting now after today's game. Central Punjab gaining more points, and Northern bit of in a drift, but they have another opportunity to make things right for them, but it's going to be tight. We've got the next match lined up in the Kingdom Valley National T20. It's the local boys facing Khyber Pakhtunkhwa for match 28. Don't go far away, we'll join you for the live action from Multan. Very warm welcome to Multan Cricket Stadium. We're all set for match 27. That's crunched. Oh, just through the hands. Oh, that's beautifully done. Down the track, finds the connection, and it's going to travel all the way. इस बार हवा में खेला और गेंद सीधी हाथों में आ चली और उठाकर खेला 4 रन्स। फुल टॉस, ये सीधी जाएगी न्याजी के हाथ में। And gone. First blood. Shot. फ्लाइट दी और पहली गेंद पर ये विकेट ले गए। शानदार शॉट, ये 4 रन्स। फील्डर हैं पीछे थर्ड मैन पर और ये कैच मिसाली। हिट जोरदार और 6 भी।